Welcome to Revise and Resubmit, Weekend Classics. I'm Pavlov. And I'm Nikita. We begin today on a very somber note. We want to acknowledge the recent passing of a truly foundational figure in global technology and education. On November 8, 2025, Dr. Vaidyeswaran Rajaraman, often reverently referred to as the Patama, the grandfather of computer science education in India, passed away in Bengaluru. He was 92. It's a profound loss, and one that's felt, I think, across the entire global IT ecosystem. Our deepest respect and sincere condolences, of course, go out to his family, his students, and the literal millions of professionals whose careers stand on the infrastructure he built. That's a great way to put it. When we talk about the explosive growth of Indian IT, we're really talking about a history that Dr. Rajaraman not only personally shaped. He was right there in the middle of it. Right. He shaped it, he influenced it, and this is key for us today, he meticulously and authoritatively documented it. And so today, we want to dedicate this discussion to summarizing that very history. We're drawing directly from his seminal work. We are going to unpack the policy shifts, the technological leaps, and even the policy mistakes he documented over 5 decades. But to really get the weight of this history, I think you have to start with the man himself. Yes, exactly. With one specific crucial anecdote that it perfectly encapsulates his mission to transform India's technical capacity. His approach was never just theoretical, was it? It was always intensely focused on practical implementation, and I think most critically, on scaling up human expertise. Human expertise. He understood that the hardware, the machines, they meant nothing without highly trained people to run them. Precisely. So let's set the scene for you. It's the mid-1960s, specifically 1965. Dr. Rajaraman, who had trained extensively in the U.S. at MIT and Wisconsin in adaptive control systems, makes this critical career pivot. A huge pivot. He moves into computer science at IIT Kanpur. This is happening right when the very first generation of serious institutional computers are arriving in India. And at that time, the formal educational pathways to support these complex machines, they just didn't exist. The hardware arrives, but the curriculum is lagging by decades. It's a classic problem. Totally. So a major step comes with the arrival of an IBM mainframe at IIT Kanpur. Now, instead of treating this incredible asset as, some rarefied object just for high-end academic research, Which is what most people would have done. Of course. But Dr. Rajaraman saw it as a national resource, a training ground. He used this machine to train hundreds of programmers from research centers, from defense labs, and from the sort of nascent key industries all across the country. We're talking about these intensive, highly practical 10-day Fortran courses, often running nonstop. This was boot camp training, really, generating the expertise that the country desperately needed. And it needed it overnight. I mean, just think about the strategic importance of that work. These were the courses that would seed the entire emerging Indian IT industry. And the immediate crucial linkages that were forged here, that's what makes this anecdote so powerful. He was directly connecting the academic bench strength of IIT with the emerging giants of industry. We're talking about Tata Consultancy Services, TCS. Exactly. TCS and HCL Tech. He wasn't just teaching a course. He was, in a way, facilitating a national industrial relationship from the ground up. And the lasting ripple effect of that training is just monumental. The lineage flows directly through his students, and this includes none other than Narayana Murthy, the founder of Infosys, one of the modern titans of the industry. Wow. And Murthy himself later described Rajaraman not just as a teacher, but as a scholar, a gentleman, and most importantly, a mentor. And that speaks volumes about the depth of his character and his influence on the very people who would go on to lead India's digital revolution. His legacy is it's woven into the very fabric of India's human capital development. And that brings us right to the source material we're summarizing today. His article, History of Computing in India, 1955-2010. And it's important to clarify the context of this publication. This wasn't just a standard journal submission. It was a seminal monograph that Dr. Rajaraman was specifically invited to write. And the publication venue itself speaks to its authority, right? It was published in the highly prestigious and Scopus indexed IEEE Annals of the History of Computing. This was in 2014.
It's a journal recognized globally as really the authoritative source for documenting the field's history. But the unique perspective here is what really elevates the work. He wrote this not as a professional historian, digging through archives. He wrote it as an active participant. An active participant. He was physically there, in the room, shaping the policies and technologies he was documenting. That is the crucial distinction. He was an academic and a research center director, yes. But he was also an IT consultant to numerous major industries and a highly influential policymaker. He was serving on key Government of India committees that were involved in the very decision-making he analyzes and critiques. So he doesn't just describe the 4 policy breakpoints in India's IT history. No, he observed them, and in many cases, he directly influenced them. It's history written from the vantage point of the person who's driving the train. Perfectly put. Let's just quickly complete the biographical framework for you. Dr. Rajaraman was born in a road in Tamil Nadu in 1933. He later married Dharma, and his early educational path was exceptionally strong. A graduate of St. Stephen's College at Delhi University and then IISc Bangalore. And then he went on to get further specialization in the U.S., earning an MSc in electrical engineering from MIT, and later a PhD focused on adaptive control systems from the University of Wisconsin-Madison. I mean, that's a formidable technical and systems-level thinking foundation. It's exactly what was necessary for the monumental task that was waiting for him back home. His career saw him hold early faculty roles at Wisconsin and IIT Kanpur, including a visiting role at UC Berkeley. But that critical pivot we mentioned came in 1965. Right. He shifted fully and irrevocably to computer science at IIT Kanpur. And this shift was absolutely key to establishing India's first academic computer science programs, initially starting with an MTech and then later expand to the foundational BPEC degree. And that institutional groundwork, the ability to build the curriculum and the department from scratch, that's what placed him at the heart of both the technological development and, the political debates that shaped India's path forward. Okay, so let's now look at his contribution to solving what was maybe the most fundamental practical problem facing the growth of computer science in the country. The textbook gap. The textbook gap. This is such a fantastic example of his pragmatic resourcefulness, his commitment to accessibility. As computer science was getting its initial traction, they had these passionate, bright students. But a critical scarcity. A huge scarcity. A lack of readily available, accessible, and crucially affordable textbooks. Imported books were prohibitively expensive, they required hard currency, and they were often written for a U.S. context that didn't really align with India's resources or educational structure. So his solution was just wonderfully simple and direct. He didn't wait for the government to solve the foreign exchange problem or for some major international publisher to take an interest. There's no time for that. In 1968, he just printed his own Fortran programming notes right there at the campus press. And he sold them for a token fee of just 5 Indian rupees. 5 rupees. I mean, that price point was genius. It democratized knowledge. It put essential programming skills within reach of virtually any university student in the country. And the cultural significance of that was huge, right? These notes were immensely popular because they filled this desperate, localized need for practical, affordable, instructional material. And that immediate popularity led directly to professional book publishing. His books on programming, on numerical methods, digital logic, they didn't just sell well. They became perennial bestsellers. Right. They fundamentally transformed computer programming education across the entire country. They became the standard curriculum that taught 2 generations of Indian programmers the foundational tools of their trade. The multiplier effect of that kind of localized quality content is just, you can't overstate it. No, you can't. It ensured a standardization of knowledge, and it massively lowered the financial barrier to entry into this complex, high-demand field. It made the workforce scalable much faster than if they had just relied on expensive foreign materials. Moving beyond the textbooks, his institutional leadership continued to drive major academic milestones. At IIT Kanpur, he was, of course, instrumental in starting that first B.Tech cohort in computer science, and he served as a senior professor there until 1982. And following that, he made a pivotal move to IISc Bangalore. This was a period from 1982 to 1994 where his focus really shifted from foundational teaching to more advanced research computing. And this was a critical juncture. Absolutely. He was heavily involved in developing parallel computers and leading the establishment of the Supercomputer Education Research Center, or SRC.
So why was SERC so important strategically? Well, because it empowered India's high-end research computing capability at a time when the country was facing these significant international embargoes on importing advanced scientific hardware, particularly from the U.S. Right, the political climate. Exactly. So building indigenous capacity was paramount for strategic research, for defense, for space applications. You couldn't rely on anyone else. And crucially, he saw this surging national demand for IT talent was far outstripping the supply from just the elite institutions like the IITs and ISC. Right. So to rapidly meet this national workforce need, he initiated the Master of Computer Applications degree, the MCA. The MCA was a masterstroke in scaling the workforce. It provided a structured, fast-track pathway for college graduates from all sorts of diverse fields, science, math, commerce, to enter the IT sector as systems analysts and programmers. It massively expanded the available pool of qualified professionals, just as the industry was poised to explode in the 1990s. His advocacy wasn't just limited to talent or curriculum either. He was a powerful advocate for indigenous hardware capabilities. His sustained push for self-reliance and high-performance computing led directly to the creation of the Center for Development of Advanced Computing, CDAF. As we'll discuss later, this became the birthplace of India's indigenous Param supercomputers. That whole trajectory, from solving the immediate problem of textbook scarcity with a 5 rupee pamphlet to fundamentally restructuring national computing policy and advocating for advanced supercomputing research, that really illustrates the immense range of his contributions. And his influence extended directly into public service, specifically in e-governance, a field we often take for granted today. He served as an advisory panel member for the Karnataka state government from 1985 all the way to 2014. A 3-decade-long involvement. That's incredible. And that sustained presence allowed him to guide these landmark digitization initiatives at the state level. We had to highlight the Bhumi and Kaveri projects. Yes. These were critical government efforts focused on modernizing highly complex land records and property registration processes. And for you listening, if you don't appreciate the scale of this, digitizing land records in India is not just some administrative upgrade, it's revolutionary. It's absolutely revolutionary. It cuts through generations of bureaucratic red tape, it reduces massive opportunities for corruption, and it speeds up essential citizen services. It's a direct, measurable application of IT to solve massive real-world governance problems, a cause he championed consistently. It's connecting that academic expertise directly with tangible social impact. That is the definition of Vapito. Let's quickly complete his profile. We know he enjoyed classical music and was an avid reader of both fiction and nonfiction, and his contributions were, thankfully, widely recognized during his lifetime. Indeed. He received the Shanti Swara Bhatnagar Prize in 1976 for science and technology. Most notably, he was awarded the Padma Bhushan, the third highest civilian honor by the President of India in 1998. He also received honorary Doctor of Science degrees from institutions like IIT and IIT Kanpur, a rare and deserved honor. Truly a monumental figure. Okay, so having established the man who laid the educational rails, let's now look at the political and technological landscape he helped navigate. Dr. Rajaraman divides this history into 4 distinct policy phases, starting with a time defined by, tentative steps and massive policy uncertainty. The initial uncertainty, from 1955 to 1970. This period is characterized by early, cautious, and highly scientific adoption. Rajaraman pinpoints the starting line for India's computing history as the installation of the HEC-2M at the Indian Statistical Institute, ISI, in Calcutta in 1955. But the more powerful, I think, indigenous statement of intent came almost immediately after that. That same year, 1955, a team led by R. Narasimhan started designing and fabricating a digital computer at the Tata Institute of Fundamental Research in Bombay. And this was the birth of the TIFR automatic computer. TIFRAC, completed in 1959. And this wasn't a commercial venture. It was a pure, high-level scientific and strategic effort. The success of TIFRAC proved a crucial national point, that India possessed the intellectual capability to design and build complex computers effectively. It was primarily used for in-house physics problems and, critically, for supporting the nation's atomic energy establishment. So it linked computing directly to high-stakes defense and strategic research from day one. It demonstrated capability and strategic necessity at the same time. By the 1960s, adoption started to accelerate in academic and research institutions, often through foreign collaboration. Yes, the IBM 1620, installed at IIT Kanpur in 1963, was a massive educational catalyst. It was the first computer in an educational institution to come equipped with a Fortran compiler.
As Rajaraman personally experienced, this machine was essential for spreading computer education quickly. And for sheer high-performance capability, TIFR continued to lead, installing the CDC 3600-160A in mid-1964, a powerful machine used by universities and research institutes for complex calculations. But while these high-end machines were important for strategic research, the real story of commercial and industrial adoption in this era is entirely defined by the dominance of IBM. And India's severe overriding foreign exchange scarcity. Exactly. And this context is so vital. You have to understand, India was newly independent, rapidly developing, and it faced this persistent, severe balance of payments deficit. Every single imported item, especially expensive technology like computers, required hard currency US dollars or sterling. And the scarcity was so intense that the government instituted these severe centralized controls, often called the license Raj, to preserve every single dollar. Companies had to demonstrate export earnings just to justify any imports at all. This is the environment IBM was operating in. And since importing new computers was nearly impossible due to these restrictions, IBM devised this brilliantly pragmatic, almost cynical strategy. It really was. They imported used, obsolete 1401 computers, refurbished them, and then rented them out within India. They creatively claimed they were selling a computing service, not hardware, which managed to bypass some of the import restrictions. The result is this stunning economic paradox. By 1970, the obsolete IBM 1401 was the most popular computer in India, with about 80 installations. But globally, this model was being phased out in the US by 1971. And here's the real irony. Rajaraman notes that the annual rental charge for that outdated 1401 in India was actually higher than the rental price for equivalent or newer systems in the US. Unbelievable. India was paying a premium for obsolete technology purely because its currency restrictions and bureaucratic processes made it the only readily available option. But we have to give credit where it's due. IBM's service and maintenance were excellent. They trained an entire generation of Indian maintenance engineers and programmers who were essential for building future infrastructure. So, despite the economic constraints forcing India to rely on dated, expensive technology, IBM's presence nurtured the first large cohort of technical talent in maintenance and programming. They built the human foundation even if the hardware was compromised. And this period of tentative adoption and economic constraint set the unavoidable stage for the dramatic protectionist policy shifts that followed. And those protectionist policies defined the next phase, the era of self-reliance and controls, from 1970 to 1977. This is the first major policy inflection point. This is Breakpoint 1. Breakpoint 1. It represents a major centralized divergence in policy driven by two conflicting forces. The imperative for defense preparedness on one hand, and a crippling fear of widespread domestic unemployment caused by automation on the other. Let's start with the political foundation. The political environment, dominated by one party from 1947 to 1977, maintained this centralized economic control and prioritized the public sector. The policy shift around 1970 was heavily influenced by the stark realities of the 1962 border skirmish with China. That conflict fundamentally exposed India's vulnerability. It underscored the critical necessity of modern electronics and reliable communication equipment for national defense. Right. This realization spurred action, notably leading to the 1963 Baha Committee, which recommended establishing the Centralized Electronics Commission and the Department of Electronics, the DOE, to promote and control the entire electronics industry. But this strategic push for electronics ran headlong into the primary domestic constraint of the era. An intense anxiety that computers would cause massive unemployment in an already overpopulated country. This trepidation, this pervasive worry about social upheaval, it just paralyzed effective policymaking for the better part of a decade. The policy reaction was severe and restrictive. The Dandekar Committee in 1972 and then Parliament's Public Accounts Committee in 1975 prescribed these extraordinarily strict controls on introducing computers. And the argument was explicit. It was. Given the large-scale unemployment, labor-saving applications were seen as detrimental to national social stability. The social cost of computerization had to be weighed against any efficiency gains. And you have to consider the political power held by the unions at the time, especially in critical areas like banking, insurance, the railways. The fear of displacing clerks led to an environment where introducing even a single computer often required years of negotiation and bureaucratic maneuvering. The DOE, constrained by this political climate, was forced to move with excessive caution. And this translated into complex, opaque import rules for any foreign computer.
it led to unacceptable delays. Unacceptable. Rajaraman documents clearances sometimes taking anywhere from 1 to 3 years. Wow. In a field like computing, a multi-year delay is basically a rejection. It's a rejection. This environment crippled software export ambitions before they could even start, and it stifled innovation in both industry and academia. Meanwhile, global politics were just reinforcing this mandate for self-reliance. The 1971 war with Pakistan and India's subsequent 1974 nuclear test severely strained Indo-U.S. relations, Which led directly to U.S. embargoes on high-end computers and advanced electronic technology imports. And this just validated the 1968 Baba Report's core mandate. It did. Attaining self-sufficiency in systems engineering and fabrication was, and I'm quoting here, of fundamental importance from the point of view of the defense and security. Importing critical technology was simply too unreliable. So the government solution was to enforce an almost complete public sector monopoly. The DOE fully funded the Electronics Corporation of India Limited, or ECL, to manufacture computers like the TDC-12, the TDC-312, and the popular PDC-316. And here we find ECL's unheralded but absolutely crucial success. It's often overlooked because their commercial machines weren't competitive globally, but their success was designing and fabricating ruggedized computers. They produced these TDC-316s, adhering strictly to MIL specifications, military specifications, for the Indian Air Force's Air Defense Ground Environment Systems, ADGGS. Let's pause on that technical detail. Ruggedized and MIL specifications. This implies robust machines designed to operate in extreme non-standard conditions, right? High altitudes, vibration, electromagnetic interference, wide temperature swings, typical of strategic border deployment. Exactly. And the indigenous production of this specific type of computer was non-negotiable. Why? Because it was a matter of national security and strategic autonomy. Importing fully assembled ADGES systems risked revealing highly sensitive defense parameters, and dependence on foreign vendors meant these crucial systems could be shut down or rendered useless by sudden international embargoes, as the 1974 nuclear test fallout proved. So these ruggedized TDC-316 systems, designed by TIFR and deployed along India's borders, were essential for early detection of unfriendly aircraft. That's right. This proved the strategic necessity of indigenous design, even if the general policy of component-level self-reliance was economically flawed for the consumer market. So within the larger policy of centralized control, which ultimately slowed commercial growth, there was this specific strategic defense requirement that was brilliantly met by indigenous R&D. Exactly. And despite the overall regulatory bottleneck, the DOE did lay some important institutional foundations during this phase. They established the National Center for Software Development in 1972 and the National Informatics Center, or NIC, in 1975. And NIC was focused on government computing and early e-governance efforts. They also established the Computer Maintenance Corporation, CMC, which became vital for maintaining existing imported computers, particularly those abandoned by IBM when the political winds changed. Which brings us directly to the moment that fundamentally broke this highly restrictive structure. The pivot to private enterprise from 1978 to 1990. This is breakpoint 2. This is the moment when economic nationalism forced a global giant out and inadvertently created the space for domestic enterprise to flourish. The critical catalyst was the Foreign Exchange Regulation Act, FARA, enacted in 1973. Rajaraman explains FARA was an expression of economic nationalism meant to protect local industries and preserve scarce foreign exchange. It mandated that foreign companies operating in India must dilute their equity stake to 40% or less. IBM flatly refused to comply with this. They argued it conflicted with their global operating model. And they weren't alone in that refusal. This era saw the exit of several major global players, famously Coca-Cola, which refused to reveal its proprietary formula. So when IBM finally left in 1978, it created this enormous vacuum in the industrial computing sector, which was coupled with the long-pending mini-computer policy announcement. And that departure, compounded by ECL's inability to meet the rising market demand, finally threw the doors open to private entrepreneurs. It ended the public sector monopoly on computer manufacturing. The Sondhi Committee in 1978 officially suggested allowing private manufacturers to enter the field, making a crucial recommendation. The focus should shift to systems engineering integrating parts, rather than the complex and rapidly obsolescing component manufacturing. And the political champion for this shift emerged post-1984 in the form of Prime Minister Rajiv Gandhi. He was apparently convinced of IT's importance after personally witnessing the success of computerizing the clerical chores for the 1982 Asian Games.
using locally assembled machines and software developed by NIC. So that domestic success made IT politically palatable. It did, and his conviction resulted in the landmark 1984 liberalized mini-computer policy. This policy was truly revolutionary because it just slashed the regulatory complexity that had defined the previous decade. Right. It allowed private companies to manufacture more powerful 32-bit machines. It removed internal manufacturing constraints, greatly simplified the import of assembled boards and microprocessors, and significantly reduced import duties. And that change in policy on importing populated boards, these pre-assembled circuits, that was the technical pivot. It fundamentally transformed manufacturing from complex component production into much faster, cheaper, and less resource-intensive assembly and system integration. This was the exact strategy Rajaraman had argued for earlier. He realized that competing on components was futile, given the global obsolescence cycles. And the market responded immediately, violently. Within just 2 years of that 1984 policy announcement, computer growth increased by 100%, and critically, costs dropped by 50%. A 50% drop. This dramatic affordability finally made personal computers accessible. It spread computer usage beyond elite research institutes and into businesses and smaller institutions. And this catalyzed a generation of new technical entrepreneurs. You have DCM, HCL, WIPRO, PSI, ORG systems. They flooded the market. And technically, there was another crucial side effect. Unix. Unix became the operating system of choice, partly standardized for projects like banking. This was a gift to the future. It really was. It led to the mass creation of this large, highly competent pool of Indian systems programmers who became experts in Unix and C programming. This was the backbone of global enterprise computing, and it proved absolutely invaluable for the massive software export boom just a few years later. The human capital was primed. But the biggest shift wasn't technical, it was psychological. It happened among the general public. And it was entirely thanks to the Indian Railways. The Indian Railways seat and berth reservation system computerization, implemented between 1984 and 1986. This was the moment of mass public acceptance. Until then, the public associated computers with job loss and bureaucratic complication. Just consider the scale for a moment. Handling 5 million passengers and 50,000 reservation requests every single day. Before computerization, citizens endured these notoriously long, frustrating queues, sometimes for hours, just to book a ticket. So CMC implemented the system in New Delhi with 50 counters, and it allowed customers to reserve any train seat from any counter in the country. And the system was a phenomenal success. It saved untold hours for the public. Rajaraman emphasizes this project was an eye-opener that definitively demonstrated the indisputable advantages of computers to both the general public and, crucially, to the skeptical white-collar workers who had previously feared automation. It's genuinely fascinating, isn't it, that a bureaucratic system, the source of so much public frustration, was the very mechanism that ultimately convinced the public that computers were beneficial, necessary, and reliable. And that public acceptance paved the way for the government to aggressively promote software export, recognizing it as a genuine high-growth industry. Indeed, software development was given formal industry status, which led to fiscal concessions and tax breaks. The government even made the pragmatic decision to recognize that sending Indian engineers abroad for on-site maintenance work counted as software export because it generated the vital foreign exchange the country still desperately needed. This policy focus led directly to the establishment of the Software Technology Parks, the STPs, starting in Bangalore in 1990. These parks were government-provided infrastructure, offering essentials like continuous power and dedicated satellite links, things small entrepreneurs couldn't afford on their own. And that allowed them to enter the software export market without massive initial capital outlay. This infrastructure, combined with the tax incentives, led to the cautious entry of key multinationals. Texas Instruments, TI, opened a pioneering offshore software development center in Bangalore in 1985, linking it via satellite to Dallas. And others followed. GE, Citibank, American Express, Cadence. By 1990, export earnings had reached a significant US $128 million. The gears were turning, but the full potential was still constrained. The stage was perfectly set for explosive growth, but somewhat ironically, it took a crippling economic crisis to force the government's hand and fully unleash the industry. And that crisis is Breakpoint 3.
global integration and exponential growth, spanning 1991 to 1997. India faced an existential financial reckoning in 1991. The country was on the brink of defaulting on its external debts, which necessitated an emergency acceptance of strict conditions from the IMF and the World Bank. And this triggered sweeping, irreversible economic liberalization across the entire economy. The actions taken were immediate and dramatic. The rupee was devalued overnight. It plummeted from about 17.5 to 26 per US dollar, and foreign investment was now aggressively welcomed. This radical shift in economic philosophy was the single most powerful catalyst the IT industry needed. And these domestic policy changes coincided with a perfect storm of global market demands. You had the urgent, massive, and time-bound task of fixing the Y2K bug across legacy systems globally. Right. The requirement for euro currency conversion, and a critical factor: the established, technically savvy Indian diaspora in the U.S., which acted as a trusted bridge to open up large-scale international contracts. The government's policy response was lightning fast and highly targeted. Import duty on computers used for export was abolished. Software companies' export earnings were made tax-free for a decade, and crucially, 100% MNC equity was allowed. Which completely removed a FARA constraint that had pushed IBM out just over a decade earlier. And the infrastructure finally caught up. The National Telecom Policy of 1994 allowed private companies into telecommunications services, and software companies were permitted dedicated high-speed satellite links with overseas clients. Which enabled real-time remote project management and execution. And the numbers just confirm this convergence was volcanic. Export earnings skyrocketed, growing from US $128 million in 1990 to US $1.76 billion by 1997. An average annual growth rate of 45%. That is astonishing. And the industry employed 160,000 software engineers by the end of that period. And this is where Indian innovation truly crystallized its global market dominance. Indian companies didn't just compete, they revolutionized global logistics. They invented the global delivery model, the GDM. And institutionalized the 24-hour workday for the IT industry. Let's expand on that. The 24-hour workday wasn't just a marketing slogan, was it? No, it was a logistics feat made possible by the time difference. An Indian team could receive a project module at the end of the U.S. business day, say, testing a user interface. They would work on it overnight, complete the fixes, and pass the updated code back to the U.S. development team for review in the next phase of work when their morning began. This seamless, continuous cycle dramatically cut development time. And it made India an indispensable partner in mission-critical projects like Y2K remediation. But this reliance required immense trust from global clients, which meant quality had to be bulletproof. Absolutely. Indian companies aggressively shifted focus to rigorous international standards, achieving ISO certification and seeking SCI's Capability Maturity Model, or CMM certification. We should unpack CMM Level 5 because it's often used as a simple metric without people understanding what it really means. Right. CMM Level 5 is the highest tier of process optimization. Achieving it meant the company had established predictable, repeatable, and quantifiable management processes. This certification wasn't just a badge. It was critical for securing the trust of U.S. clients who were dealing with mission-critical, often multi-billion-dollar systems like Y2K conversions. So it demonstrated India's commitment to process maturity and quality assurance. Exactly. And the poetic reversal came with the return of the multinationals. IBM re-entered India in 1992, initially partnering with the Tata Group. American Express followed in 1994, setting up massive back-office functions in Mumbai to handle payroll processing and accounts receivable. This era of double-digit growth marked India's permanent arrival on the global IT map. Which naturally leads us to the final phase documented by Rajaraman, IT dominance and world-class status, from 1998 to 2010. This is Breakpoint 4, where the government's policy lessons were finally cemented. By this time, the policy focus was permanently shifted. Starting in 1998, Breakpoint 4 solidified the emphasis. Policy moved definitively away from trying to achieve self-reliance in hardware production, which had proved economically unviable. Right, to focusing entirely on software services exports. The global decline in hardware costs, combined with India's booming software export earnings, totally justified this shift. The government was proactive. The NDA government in 1998 set up an ambitious IT task force that set the target of achieving US $50 billion in exports by 2008.
And they back this up with robust legislation. The IT Act was passed in 2000 to facilitate e-commerce and digital legal recognition. And the Special Economic Zone, or SEZ, Act of 2005, provided powerful incentives. Duty-free hardware import and 10-year income tax exemptions on export earnings. The results exceeded expectations. Export earnings grew from US $2 billion in 1998 to hit that US $50 billion mark by 2010. Indian IT companies became genuine multinationals, listing overseas and establishing over 400 delivery centers globally. And crucially, the nature of the work performed evolved dramatically. Indian companies graduated from low-level coding and testing to complex, high-value, end-to-end application development, like building entire credit card processing systems. And they shifted from charging contracts based purely on low manpower costs to securing high-value fixed-price contracts based on guaranteed quality and timely delivery. They were competing on performance and reliability, not just affordability. That quality benchmark reached peak world-class status. Rajaraman points out that by 1999, 6 of the world's 12 CMM Level 5 certified companies were operating in India. A staggering statistic. It just demonstrated this advanced process maturity and reliability in the most mission-critical enterprise systems. This success in core software services rapidly drove diversification into IT-enabled services, or ITES, and business process outsourcing, BPO. Right, we're talking about services like call centers, medical transcription, payroll, complex account reconciliation. And this diversification was heavily fueled by the vast pool of young English proficient graduates. American Express in 1994 and GE Capital, which established its massive center in 1997, were the pioneers here. They demonstrated India's capability to handle high-volume, time-critical back-office work for global finance and services. Another critical trend was the establishment of MNC R&D centers. Companies like IBM, which grew to 85,000 employees by 2010, Microsoft, Oracle, Philips, they all set up shop. And they were initially attracted by the reasonable cost of high-quality Indian engineers, but their mission quickly evolved. And that evolution is the fascinating part. It is. They realized the high quality wasn't just suitable for maintenance, it was capable of true innovation. Texas Instruments, for example, initially started with software tool development, but rapidly moved to end-to-end integrated circuit design. And by 2008, TI had obtained an astounding 309 patents from its India center. A colossal shift. MNCs weren't just outsourcing maintenance, they were innovating in India. Rajaraman documents that multinational companies operating in India collectively obtained over 1,600 patents between 2006 and 2010. It's a clear signal that the R&D capability was world-leading. On the hardware side, while the mass manufacturing of commodity PCs faded, India just couldn't compete with the scale and quality of China, and Taiwan India maintains strategic excellence in high-performance computing. And this fulfills the initial self-reliance mandate, but in a new form. CDAC designed the Param Padma in 2003, achieving nearly a teraflop of processing power. And the Tata Group's Computational Research Laboratories designed ECA in 2007. ECA was rated the 4th fastest computer in the world upon its announcement, and critically, the fastest in Asia. This demonstrated a sustained strategic hardware capability at the absolute high end of computing. It proved that India could still compete and lead in computing power, fulfilling that defense and strategic research requirement that TIFREC began 5 decades earlier. And finally, e-governance reached the masses in a meaningful way. The application of computers rapidly reduced corruption and expedited key citizen services like property registration and income tax processing. And the final symbolic triumph was the transition of the Indian Railways reservation system to a fully web-based platform in 2006. This allowed passengers to put tickets at home, a far cry from the long queues of the 1980s. It solidified the necessity and reliability of computing for the massive Indian populace. Which brings us to Dr. Rajaraman's final reflective analysis of this extraordinary 55-year journey, reflections and lessons learned. He approaches this history not just as a chronicler, but as a critic, identifying where policy failed and where it succeeded. He identifies 3 key strategic policy errors. The first was that rigid insistence on component-level self-reliance during the 1970s and early 1980s. The push to design computers from the chip level up. And his argument against this strategy is sharp. For a country with low demand and scarce resources, it was strategically incorrect.
Given the rapid obsolescence of technology globally, it would have been wiser to focus scarce resources on systems engineering. Integrating imported subassemblies. Right, rather than trying to compete in complex component manufacturing, a realization that only came in the mid-1980s. But if defense and strategic autonomy were the overriding priority, wasn't component-level self-reliance the only viable patriotic strategy at the time, even if it was economically flawed? That's the essential tension, isn't it? Rajaraman suggests that while the military requirement was legitimate, the mistake was applying that same rigid philosophy to the commercial and educational sectors. Right, where systems integration would have been sufficient for growth and would have allowed the country to build volume. The second major error was the crippling fear of unemployment that dominated policies in the 1970s. Rajaraman argues that with large data processing requirements, like the railways or the census computers, are simply inevitable. The success of the Railway Reservation Project proved this point emphatically. It changed mindsets across the political and general landscape. The fear was fundamentally misconstrued. And the third error was a failure of investment in a specific area. Not investing sufficiently in integrated circuit, or IC, manufacturing and securing technical collaboration in the late 1970s. This meant India completely missed out on the component wave that later enriched economies like Taiwan and South Korea. However, he is equally emphatic about highlighting the policies that truly paid off handsomely, beginning with the investment in higher education. The early investment in institutions like the IITs created this astonishing pool of human capital. Graduates who became technology leaders and entrepreneurs both domestically and in Silicon Valley. And the proactive initiatives by the DOE in the early 1980s, the creation of the MCA degree, CS bachelor's programs, massive teacher training efforts, they created the precise human resources necessary to feed the software industry boom of the 1990s. He also noted that government investment in research infrastructure, NI, NCST, CDA, created a large pool of technology leaders and strengthened institutional foundations, especially in high-performance computing. And he concludes that this investment in education and research had a far better multiplier effect than the investment made in trying to prop up struggling government manufacturing companies. So government investment in knowledge and infrastructure proved to be a wiser long-term strategy than trying to maintain an economically unviable hardware monopoly. And finally, the policies of economic liberalization from the mid-80s through the critical 1990s, coupled with the aggressive emphasis on quality certification like CMM Level 5, were absolutely essential for achieving scale and success in the ruthlessly competitive international market. Looking ahead, he concluded his monograph by identifying the key future challenges facing India's IT sector as of 2010. The primary challenge remains IT diffusion. By 2010, IT was heavily concentrated in urban areas and among the middle class. Diffusion into rural areas, where over 70% of the population lives, was severely hampered. By three factors: chronic poor electricity access, the high cost of physical computing hardware, and a crippling lack of local language applications. However, there is the technological silver lining, he pointed out. The game changer that bypasses those traditional infrastructure problems. Mobile phones. Mobile phones. Mobile phone penetration is deep and highly valued in rural areas because the cost of usage is among the lowest in the world, and crucially, they don't require the continuous availability of electricity that physical computer centers or desktop PCs do. Mobile penetration offered a path to digital inclusion that traditional computing just could not. His final takeaway regarding sustainability was clear. To sustain this phenomenal growth, the industry must fundamentally shift its investment focus. It must move beyond providing services to investing significantly more in R&D. Developing truly innovative products for both international markets and the vast underexplored local market, with a specific focus on innovative applications based on mobile phones. This is the ultimate lesson from a life dedicated to technology. The journey from a few scientists in 1955 to a global IT powerhouse in 2010 was marked by learning from past political mistakes, strategic investments in human capital, and the sheer intellectual capacity of its people. A capacity that Dr. Rajaraman was instrumental in unlocking and channeling into productivity. It is a monumental achievement, both in shaping this history and in documenting it so thoroughly and critically for posterity. We highly encourage you to explore the source material yourself. Yes, regardless of whether you subscribe to our full analysis service, please take the time to read the full monograph. The link to the article, History of Computing in India, 1955-2010,
is provided in our show notes. And also we have included the link to Dr. Rajaraman's recently published book, Anecdotes from the History of Modern Computing, which was published just in June 2024, a testament to his lifelong passion for chronicling this remarkable complex field. As we reflect on his conclusion about future challenges, consider this final provocative thought for you. If India now possesses one of the world's highest rates of mobile penetration, effectively bypassing the need for fixed computing infrastructure and continuous power, what truly disruptive local applications built right now on those mobile platforms might finally revolutionize that rural economy, solving the problems of power, access, and language that physical computing hardware failed to solve for so many decades. A question that Pitama would most certainly want us all to pursue. And don't forget to subscribe to Revise and Resubmit on Spotify and Apple Podcasts. Until next time, keep those minds curious, keep questioning, and keep revising and resubmitting. রিভাইজ অ্যান্ড রিসাবমিটের উইকেন্ড ক্লাসিক্স পর্বে আপনাদের স্বাগত। আমি পভলভ। আর আমি নিকিতা। 8ই নভেম্বর 2025 ভারতের প্রযুক্তি জগতের জন্য একটা ভীষণ দুঃখের দিন। হ্যাঁ, 92 বছর বয়সে আমরা হারালাম ডক্টর বৈদ্যেশ্বরন রাজারামনকে, যাকে সবাই ভারতের কম্পিউটার বিজ্ঞান শিক্ষার পিতামহ বলেই জানে। তার চলে যাওয়াটা শুধু কম্পিউটার জগৎ নয়, আমার মনে হয় গোটা দেশের জন্যই এটা একটা বিরাট ক্ষতি। তা তো বটেই। আজ আমরা তার কাজকে স্মরণ করেই তাকে আমাদের বিনম্র শ্রদ্ধা জানাতে চাই। একদম ঠিক। আর তাকে শ্রদ্ধা জানানোর শ্রেষ্ঠ উপায় হলো তার নিজের কাজকে বোঝা, তার নিজের কথাগুলো শোনা। ঠিক 14 সালে IEEE কম্পিউটার সোসাইটির আমন্ত্রণে উনি IEEE Annals of the History of Computing জার্নালে একটা অসাধারণ গবেষণাপত্র লিখেছিলেন ভারতের কম্পিউটিংয়ের ইতিহাস নিয়ে। ও আচ্ছা। আজ আমাদের আলোচনার ভিত্তি হবে সেই লেখাটাই। এটা অনেকটা ওর নিজের মুখেই ভারতের প্রযুক্তি যাত্রার গল্প শোনার মতো। চলুন তাহলে সেই গল্পেই ফেরা যাক। ডক্টর রাজারামনের শুরুটা কিন্তু কম্পিউটার বিজ্ঞান দিয়ে হয়নি, তাই না? না, একদমই না। 1933 সালে তামিলনাড়ুর ইরোডে জন্ম, তারপর দিল্লির সেন্ট স্টিফেন্স কলেজ, বেঙ্গালুরুর ISIC, আর তারপর তো বিদেশেও পড়াশোনা করেছেন। হ্যাঁ, MIT এবং ওয়েসকনসিন ম্যাডিসন ইউনিভার্সিটি থেকে উচ্চশিক্ষা। ওনার PhD ছিল কন্ট্রোল সিস্টেমের ওপর। কন্ট্রোল সিস্টেম থেকে কম্পিউটার সায়েন্স, এই পরিবর্তনটা কিভাবে হলো? 65 সালে উনি যখন IIT কানপুরে যোগ দেন, তখন কন্ট্রোল সিস্টেমের অধ্যাপক হিসেবেই এসেছিলেন, কিন্তু সেখান থেকেই কম্পিউটার বিজ্ঞানের জগতে তার প্রবেশ। আর ওটাই ছিল ভারতের জন্য একটা ঐতিহাসিক মুহূর্ত। এখান থেকেই তাহলে আমাদের আলোচনাটা শুরু করা যাক। 60-এর দশকের মাঝামাঝি IIT কানপুর, তখন তো ভারতে কম্পিউটার সায়েন্স বলে কোনো বিষয়ই ছিল না। না, কিছুই না। চারিদিকে একটা নতুনত্বের আবহাওয়া, কিন্তু পথ দেখানোর মতো কেউ নেই। সেই শুরুর দিনগুলো ঠিক কেমন ছিল? ঠিক তাই। তখন ভারতে কম্পিউটার বিশেষজ্ঞ বলতে হাতে গোনা কয়েকজন। আর সেই সময়েই IIT কানপুরে একটা যুগান্তকারী ঘটনা ঘটল। কি ঘটনা? 1963 সালে আমেরিকার দেওয়া সহায়তায় প্রতিষ্ঠানে একটা IBM 1620 মেইনফ্রেম কম্পিউটার এসে পৌঁছল। IBM মেইনফ্রেম? হ্যাঁ, সেই সময়ের নিরিখে এটা একটা অত্যন্ত শক্তিশালী যন্ত্র। ডক্টর রাজারামন বুঝতে পেরেছিলেন এই যন্ত্রটাকে শুধু গবেষণার চার দেওয়ালের মধ্যে আটকে রাখলে চলবে না। তিনি এটাকে একটা জাতীয় সম্পদে পরিণত করতে চেয়েছিলেন। একেবারে। তিনি দেখলেন যে শিল্প আর অন্যান্য গবেষণা কেন্দ্রগুলোতে এমন লোক দরকার যারা এই যন্ত্র চালাতে পারে, এর জন্য প্রোগ্রাম লিখতে পারে। তাই উনি একটা ঝুঁকি নিলেন। কি রকম? বাইরের সংস্থাগুলোর কর্মীদের জন্য 10 দিনের ফোরট্রেন প্রোগ্রামিং কোর্স চালু করলেন। ভাবা যায়, একটা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান দেশের গোটা ইন্ডাস্ট্রির জন্য প্রশিক্ষণের দরজা খুলে দিচ্ছে। হ্যাঁ, আর আজকের দিনে আমরা যাকে বলি স্কিল বিল্ডিং, উনি সেটা 60-এর দশকেই শুরু করে দিয়েছিলেন। এর প্রভাবটা ঠিক কতটা সুদূরপ্রসারী ছিল? এর প্রভাব ছিল কল্পনারও বাইরে। এই উদ্যোগের ফলে টাটা কনসালটেন্সি সার্ভিসেস বা TCS, RAI, পরবর্তীকালে HCL টেকের মতো সংস্থাগুলোর সঙ্গে IIT কানপুরের একটা গভীর সম্পর্ক তৈরি হয়। ইনফোসিসের প্রতিষ্ঠাতা NR নারায়ণ মূর্তিও তো ওনার ছাত্র ছিলেন। একদম। উনি তো আজও ডক্টর রাজারামনকে একজন আদর্শ শিক্ষক, ভদ্রলোক এবং পরামর্শদাতা হিসেবে স্মরণ করেন। সুতরাং বলাই যায় ওই একটা কোর্স ভারতের ভবিষ্যতের IT সার্ভিস ইন্ডাস্ট্রির বীজ বপন করেছিল। এটা তো একটা অসাধারণ গল্প, কিন্তু আরেকটা সমস্যা তো ছিল। কি? শেখানোর জন্য তো পাঠ্য বই লাগে।
তখন তো কম্পিউটার সায়েন্সের কোনো ভারতীয় বই ছিল না। উনি এই সমস্যার সমাধান কিভাবে করলেন? এইখানেই ডক্টর রাজারামনের উদ্ভাবনী শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। যেহেতু কোনো বই ছিল না, উনি ক্লাসে যা পড়াতেন সেই নোটগুলোকেই সম্বল করে এগোচ্ছিলেন। নিজের নোট? হ্যাঁ, 1968-এ উনি নিজের হাতে লেখা সেই ফোর্ট্রান নোটগুলো ছাপিয়ে মাত্র 5 টাকায় বিক্রি করতে শুরু করেন। মাত্র 5 টাকায়? এটা তো আজকের দিনের স্টার্টআপ মানসিকতারই প্রতিফলন। নিজের সমস্যা নিজে সমাধান করা আর সেটাকে সকলের জন্য সহজলভ্য করে তোলা। একদম। আর সেই নোট এতটাই জনপ্রিয় হয়েছিল যে কিছুদিনের মধ্যেই একটি প্রকাশনা সংস্থা সেটিকে বই আকারে প্রকাশ করে। বাহ! ওর লেখা প্রোগ্রামিং, নিউমেরিক্যাল মেথডস আর ডিজিটাল লজিকের বইগুলো কয়েক দশক ধরে বেস্টসেলার ছিল। বলা যায় ভারতের কয়েক প্রজন্ম প্রোগ্রামার তার লেখা বই পড়েই প্রোগ্রামিং শিখেছে। আর এই ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়েই আইআইটি কানপুরে প্রথমে এমটেক আর পরে বিটেক কম্পিউটার সায়েন্স প্রোগ্রাম শুরু হয়। হ্যাঁ, একটা নতুন একাডেমিক্যালি ডিসিপ্লিন তৈরি হলো তার হাতে ধরে। তাহলে একটা প্রতিষ্ঠান তো তৈরি হলো, কিন্তু একটা প্রতিষ্ঠান তো একা গোটা দেশকে বদলাতে পারে না। এর জন্য তো জাতীয় স্তরে নীতি আর সমর্থনের প্রয়োজন। ঠিক এখানেই 70-এর দশকের একটা টানাপোড়েন শুরু হয়, তাই না? একদিকে প্রযুক্তির হাতছানি, অন্যদিকে চাকরি হারানোর ভয়। একদম। ডক্টর রাজারামন তার গবেষণাপত্রে এই সময়টাকে একটা ব্রেক পয়েন্ট হিসেবে উল্লেখ করেছেন। তখন সরকারের মূল লক্ষ্য ছিল আত্মনির্ভরতা। আর কম্পিউটার এলে মানুষের চাকরি চলে যাবে, এই ভয়টা বেশ জোরালো ছিল। খুবই জোরালো ছিল। সংসদীয় কমিটিগুলো এই নিয়ে বেশ সতর্ক ছিল। সেই কারণেই তখন দেশীয় প্রযুক্তিতে কম্পিউটার তৈরির উপর এত জোর দেওয়া হচ্ছিল। সরকারি সংস্থা ইসিআইএলকে দিয়ে। হ্যাঁ, সরকার চেয়েছিল প্রযুক্তির নিয়ন্ত্রণ নিজেদের হাতে রাখতে। কিন্তু 1978-এ একটা বড় ঘটনা ঘটল। তৎকালীন সরকারের নীতির সঙ্গে মতের অমিল হওয়ায় আইবিএম ভারত থেকে তাদের ব্যবসা গুটিয়ে চলে যায়। আইবিএম এর মতো একটা টেক জায়ান্ট দেশ ছেড়ে চলে যাওয়া তো একটা বিরাট ধাক্কা ছিল নিশ্চয়। তখন অনেকেই এটাকে বিপর্যয় হিসেবে দেখেছিল, কিন্তু ডক্টর রাজারামনের গবেষণাপত্র থেকে বোঝা যায় এটা ছিল একটা ব্লেসিং ইন ডিসগাইজ, শাপে বর। তাই কিভাবে? আইবিএম এ তৈরি করা বাজারটা খালি হয়ে গিয়েছিল, আর সেই সুযোগটাই নিল শিবনাদারের HCL এবং আজিম প্রেমজির উইপ্রোর মতো কিছু সাহসী ভারতীয় সংস্থা। ও আচ্ছা, তারা তখন নিজেদের মাইক্রো প্রসেসের ভিত্তিক কম্পিউটার তৈরি করতে শুরু করে। ঠিক, একটা সংকট এভাবেই সম্ভাবনার দরজা খুলে দিয়েছিল। তাহলে পরিস্থিতি বদলাতে শুরু করলো কখন? মানে সরকারি নীতিতে কম্পিউটারের প্রভাব কবে থেকে প্রথমে পড়া শুরু হলো? এর জন্য আমাদের 1982 সাল পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। সে বছর দিল্লিতে এশিয়ান গেমস অনুষ্ঠিত হয়। হ্যাঁ, মনে আছে। সেই গেমসের টিকিট বিক্রি থেকে শুরু করে ফলাফল ব্যবস্থাপনা সবকিছু কম্পিউটারাইজড করা হয়েছিল। এই বিপুল কর্মযজ্ঞের সাফল্য তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধীর নজর কাড়ে। আর উনিই তো প্রযুক্তির শক্তিটা উপলব্ধি করেন। একদম। এরপরই 1984 সালে একটি উদার কম্পিউটার নীতি ঘোষণা করা হয়। আর এই নীতির প্রভাব ছিল নাটকীয়। কতটা নাটকীয়? ডক্টর রাজারামন তার গবেষণাপত্রে উল্লেখ করেছেন যে এই নীতির ফলে মাত্র 2 বছরের মধ্যে ভারতে কম্পিউটারের ব্যবহার 100% বেড়ে যায়, আর দাম প্রায় 50% কমে যায়। অবিশ্বাস্য। কিন্তু সংখ্যার থেকেও বড় পরিবর্তনটা এসেছিল মানুষের মানসিকতায়। আপনি সম্ভবত ভারতীয় রেলের রিজার্ভেশন সিস্টেমের কথা বলছেন। ঠিক ধরেছেন। 1986 সালে যখন রেলের রিজার্ভেশন সিস্টেম কম্পিউটারাইজড হলো, ওটা একটা বিপ্লব ছিল। তা তো বটেই। ঘন্টার পর ঘন্টা লাইনে দাঁড়ানো, দালালদের দৌরাত্ম্য, এসব কিছুর অবসান ঘটল। এটা শুধু সুবিধার ব্যাপার ছিল না, এটা ছিল একটা বিশ্বাসের মুহূর্ত। প্রথমবার দেশের সাধারণ মানুষ, যারা হয়তো কম্পিউটার কি তা জানতই না, তারা নিজেদের জীবনে এর সরাসরি সুফল দেখল। কম্পিউটার আর কোনো ভয়ের বস্তু রইল না, বরং একটা সমাধানের প্রতীক হয়ে উঠল। আর এই সময়েই ডক্টর রাজারামন আইআইটি কানপুর ছেড়ে IISc বেঙ্গালুরুতে যোগ দেন। সেখানে তার ভূমিকা কী ছিল? বেঙ্গালুরুতে এসে তিনি আরও বড় পরিসরে কাজ শুরু করেন। তিনি সেখানে ভারতের নিজস্ব প্যারালাল কম্পিউটার তৈরি করেন এবং সুপার কম্পিউটার এডুকেশন অ্যান্ড রিসার্চ সেন্টার বা CERC এর নেতৃত্ব দেন। ওনার উদ্যোগেই তো MCA ডিগ্রি চালু হয়, তাই না? হ্যাঁ, যা আইটি ইন্ডাস্ট্রির জন্য হাজার হাজার দক্ষ কর্মী তৈরি করতে শুরু করে। একই সাথে তিনি সওয়াল করেছিলেন যে আমেরিকার উপর নির্ভর না করে ভারতের নিজস্ব সুপার কম্পিউটার তৈরি করা উচিত।
আর তার এই সলি পরবর্তীকালে ড্যাক প্রতিষ্ঠায় এবং পরম সুপার কম্পিউটার তৈরিতে সাহায্য করেছিল। একদম ঠিক। এরপর তো এলো 1991 সাল, আর ভারতের অর্থনীতিতে একটা বিরাট পরিবর্তন, অর্থনৈতিক উদারীকরণ। নিঃসন্দেহে ওটা ছিল ভারতের তথ্য প্রযুক্তি শিল্পের জন্য সবচেয়ে বড় টার্নিং পয়েন্ট। ডক্টর রাজারামান তার গবেষণাপত্রে এই সময়ের বৃদ্ধিকে কিভাবে দেখেছেন? উনি এটাকে দর্শনীয় বৃদ্ধি বা স্পেকটাকুলার গ্রোথ বলে বর্ণনা করেছেন। একটা পরিসংখ্যান দিলেই বিষয়টা পরিষ্কার হবে। বলুন। 1990 সালে ভারতের সফটওয়্যার রপ্তানি ছিল মাত্র 128 মিলিয়ন মার্কিন ডলার। আচ্ছা। 7 বছর পর 1997 সালে সেই সংখ্যাটা বেড়ে দাঁড়ায় 1759 মিলিয়ন ডলারে। বলেন কি? এটা তো একটা অবিশ্বাস্য লাভ। হ্যাঁ, এর পেছনে অবশ্য বেশ কয়েকটি বিষয় একসঙ্গে কাজ করেছিল। প্রথমত, বিশ্বজুড়ে Y2K বাগের ভয়। হ্যাঁ, 2000 সাল আসার আগে পুরনো কম্পিউটার সিস্টেমগুলোকে ঠিক করার জন্য প্রচুর প্রোগ্রামারের দরকার ছিল। আর ভারত সেই সুযোগটা দারুণভাবে কাজে লাগায়। দ্বিতীয়ত, ইউরোপে ইউরো মুদ্রা চালু হওয়ার ফলে তাদের ব্যাংকিং সফটওয়্যার বদলানোর প্রয়োজন হয়। আর তৃতীয় এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, সফটওয়্যার টেকনোলজি পার্ক বা এসটিপি স্থাপন। ঠিক, এই এসটিপিগুলো ছিল এক একটা বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চলের মতো শুধু সফটওয়্যারের জন্য। এখানে কোম্পানিগুলোকে ট্যাক্স ছাড়, হাই স্পিড ইন্টারনেট, 24 ঘন্টা বিদ্যুৎ সব সুবিধা দেওয়া হয়েছিল। এটা ছিল সরকারের একটা মাস্টার স্ট্রোক। এর ফলে বেঙ্গালুরু, হায়দ্রাবাদ, পুনের মতো শহরগুলো বিশ্ব আইটি মানচিত্রে জায়গা করে নেয়। আর ভারতের পরিচিতিও বদলে গেল। মানে ভারত শুধু সস্তার কাজের জায়গা নয়, বরং গুণমান এবং সময় মতো ডেলিভারির জন্যও পরিচিতি পেতে শুরু করল। ঠিক। আর এই সময়েও ডক্টর রাজারামন কিন্তু চুপ করে বসেছিলেন না। না, একেবারেই না। তিনি কর্ণাটক সরকারের প্যানেলের সদস্য হিসেবে ভূমি মানে জমির রেকর্ড ডিজিটাইজেশন আর কাবেরী মানে সম্পত্তির রেজিস্ট্রেশন এইসব যুগান্তকারী গভর্নেন্স প্রকল্পে পথ দেখিয়েছিলেন। তার মানে ওনার কাজ শুধু গবেষণাগার বা ক্লাসরুমে সীমাবদ্ধ ছিল না, সাধারণ মানুষের জীবনকেও ছুঁয়ে গিয়েছিল। একদম। শিক্ষক, গবেষক, লেখক, নীতি নির্ধারক, এক জীবনে এতগুলো ভূমিকা পালন করাটা সত্যিই অবিশ্বাস্য। শুনেছি কাজের বাইরে তিনি শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের খুব অনুরাগী ছিলেন এবং প্রচুর বই পড়তেন। হ্যাঁ, হয়তো সেই শৃঙ্খলা আর সৃজনশীলতার মেলবন্ধনটাই তার কাজেও ফুটে উঠত। ওনার এই বিশাল অবদান তো জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক স্তরেও স্বীকৃতি পেয়েছে। তা তো বটেই। 1976 সালে তিনি বিজ্ঞানের সর্বোচ্চ সম্মান শান্তি স্বরূপ ভাটনগর পুরস্কার পান। 1998 সালে ভারত সরকার তাকে দেশের তৃতীয় সর্বোচ্চ বেসামরিক সম্মাননা পদ্মভূষণে ভূষিত করে। এছাড়াও একাধিক সাম্মানিক ডক্টরেট ডিগ্রিতেও ভূষিত হয়েছিলেন। হ্যাঁ, IIT কানপুর সহ আরও অনেক প্রতিষ্ঠান থেকে। এর লিঙ্ক আমাদের শো নোটসে দেওয়া আছে। এটা শুধু ভারতের প্রযুক্তির ইতিহাস নয়, এটা একজন স্বপ্নদ্রষ্টার যাত্রার দলিল, যা পড়লে বোঝা যায় কিভাবে শূন্য থেকে একটা বিপ্লব তৈরি করা যায়। এছাড়াও তার লেখা শেষ বই অ্যানেকডোটস ফ্রম দ্য হিস্ট্রি অফ মডার্ন কম্পিউটিং, যা জুন 2024-এ প্রকাশিত হয়েছে, তার লিঙ্কও শো নোটসে দেওয়া আছে। বইটিতে কম্পিউটিং জগতের অনেক মজার এবং অজানা গল্প রয়েছে। সবশেষে একটা ভাবনা রেখে যেতে চাই। ডক্টর রাজারামন তার গবেষণাপত্রের শেষে একটা আক্ষেপের কথা উল্লেখ করেছিলেন। কি রকম? তিনি লিখেছিলেন যে তথ্য প্রযুক্তি বিপ্লবের সুফল মূলত ভারতের শহরাঞ্চলই সীমাবদ্ধ থেকেছে। আজ যখন ভারতের প্রায় প্রতিটি গ্রামীণ হাতে মোবাইল ফোন পৌঁছে গেছে, তখন তার দেখানো পথে হাঁটে এই ডিজিটাল বিভাজন দূর করতে এবং দেশের প্রায় 70% গ্রামীণ মানুষের কাছে প্রযুক্তির আসল সুফল পৌঁছে দিতে আর কোন উদ্ভাবনের প্রয়োজন, এই প্রশ্নটা আমাদের সকলের ভাবার জন্য রইল। नमस्कार और रिवाइज एंड रीसबमिट की वीकेंड क्लासिक्स एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं हूं पावलो और मैं हूं निकिता। आज की बातचीत हम एक बहुत ही दुखद खबर के साथ शुरू कर रहे हैं। भारत में कंप्यूटर विज्ञान की शिक्षा के जो पितामह कहे जाते हैं डॉक्टर वैद्येश्वरन राजारमन, वो अब हमारे बीच नहीं रहे। 8 नवंबर 2025 को 92 साल की उम्र में बैंगलोर में उनका निधन हो गया। हम उन्हें अपनी गहरी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। आज हम उनके जीवन और उनके काम को उन्हीं के शब्दों के जरिए समझने की कोशिश करेंगे।
ये जो पूरी चर्चा है ये उनके एक बहुत ही खास मोनोग्राफ पर आधारित है। ये लेख 2014 में IEEE कंप्यूटर सोसाइटी के बुलावे पर एक बहुत प्रतिष्ठित जर्नल IEEE Annals of the History of Computing में छपा था। हाँ, और ये समझना जरूरी है, मतलब ये कोई ऐसा वैसा लेख नहीं था। ये जो जर्नल है अकादमिक दुनिया में इसे एक तरह का गोल्ड स्टैंडर्ड माना जाता है। अच्छा। क्योंकि ये स्कोपस इंडेक्स्ड है। आसान भाषा में कहें तो यहाँ छपी हर बात की पूरी तरह से जांच पड़ताल होती है। तो ये लेख किसी और की रिसर्च नहीं, बल्कि उस इंसान की अपनी कहानी है जिसने भारत में कंप्यूटिंग की नींव रखी। मतलब एक फर्स्ट हैंड अकाउंट। बिल्कुल। इसमें उन्होंने 1955 से लेकर 2010 तक की पूरी यात्रा को अपनी नजरों से बयां किया है। तो चलिए उनकी शुरुआत से ही शुरू करते हैं। डॉक्टर राजारमन का जन्म 1933 में तमिलनाडु के इरोड में हुआ था। उन्होंने दिल्ली के सेंट स्टीवेंस कॉलेज और फिर IISc बैंगलोर से अपनी पढ़ाई पूरी की। इसके बाद वो MIT गए और फिर PhD के लिए विस्कॉन्सिन मैडिसन विश्वविद्यालय। और यहाँ पर कहानी का मतलब पहला दिलचस्प मोड़ आता है। क्या? उनकी जो PhD थी वो थी अडेप्टिव कंट्रोल सिस्टम्स में। अच्छा, ये तो पारंपरिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का क्षेत्र हुआ है ना? हाँ बिल्कुल, मतलब ऐसे सिस्टम बनाना जो खुद सीखते हैं और माहौल के हिसाब से अपने आप को ढाल लेते हैं। ये उस जमाने की हाईटेक इंजीनियरिंग थी। लेकिन 1965 में जब वो IIT कानपुर में थे, उन्होंने एक बहुत बड़ा कदम उठाया। उन्होंने अपना क्षेत्र बदल दिया। हाँ, उन्होंने अपनी टॉप की फील्ड छोड़ दी और एक ऐसे मैदान में कूद गए जिसका भारत में अकादमिक तौर पर कोई अस्तित्व ही नहीं था। कंप्यूटर विज्ञान। ये एक बहुत बड़ा जोखिम था। ये सुनना ही कितना अजीब लगता है। मतलब आज के जमाने में कोई अपनी जमी जमाई फील्ड छोड़कर एक ऐसी दुनिया में जाए जिसका कोई नामो निशान तक न हो। बिल्कुल। और यहीं से भारत में कंप्यूटर शिक्षा की जो क्रांति है वो शुरू हुई। उन्होंने IIT कानपुर में भारत का पहला अकादमिक कंप्यूटर विज्ञान कार्यक्रम शुरू किया। M.Tech और फिर बाद में B.Tech दोनों। हाँ, पहले M.Tech और फिर बाद में B.Tech भी। उन्होंने सिर्फ एक कोर्स नहीं बनाया, उन्होंने एक पूरा इकोसिस्टम बनाने की नींव रखी। इसका कोई उदाहरण है? मतलब उन्होंने क्लासरूम के बाहर भी कैसे प्रभाव डाला? एक बहुत मशहूर किस्सा है। जब IIT कानपुर में एक नया नवेला IBM मेन फ्रेम कंप्यूटर आया तो सबने सोचा कि इसका इस्तेमाल सिर्फ रिसर्च के लिए होगा। लेकिन डॉक्टर राजारमन ने कुछ और ही सोचा। उन्होंने तुरंत इंडस्ट्री और रिसर्च सेंटरों के प्रोग्रामरों के लिए 10 दिन के फोर्ट्रान कोर्स शुरू कर दिए। फोर्ट्रान जो उस दौर की सबसे जरूरी प्रोग्रामिंग भाषा थी। हाँ बिल्कुल। मतलब उन्होंने अकादमिक संस्थान के दरवाजे इंडस्ट्री के लिए खोल दिए। सही। और इसका नतीजा जबरदस्त था। इन कोर्सेज की वजह से ही भविष्य की दिग्गज कंपनियों जैसे TCS और HCL टेक के साथ मजबूत रिश्ते बने। अच्छा। और इन्फोसिस के संस्थापक श्री नारायण मूर्ति, वो भी उनके शुरुआती छात्रों में से एक थे। उन्होंने डॉक्टर राजारमन को हमेशा एक गुरु, एक विद्वान और एक सज्जन व्यक्ति के रूप में याद किया है। तो ये दिखाता है कि डॉक्टर राजारमन सिर्फ पढ़ा नहीं रहे थे, वो भविष्य के लीडर्स तैयार कर रहे थे। और यहाँ एक और बड़ी समस्या रही होगी, पढ़ाने के लिए किताबें कहाँ से आती? उस समय भारत में तो कंप्यूटर विज्ञान पर कोई किताबें होती नहीं होंगी। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। कोई भारतीय किताबें नहीं थी, विदेशी किताबें बहुत महंगी थीं और मुश्किल से मिलती थीं। तो डॉक्टर राजारामन ने इसका भी एक बहुत ही अनोखा हल निकाला। क्या किया उन्होंने? 1968 में उन्होंने अपने फोर्ट्रॉन के जो क्लास नोट्स थे उन्हें खुद ही प्रिंट करवाया। अच्छा। हाँ, और उन्हें महज 5 रुपए में बेचना शुरू कर दिया। 5 रुपए में? मतलब उस जमाने में 1 कप चाय की कीमत में प्रोग्रामिंग सिखा दी। ये कमाल है ना। लेकिन ये सिर्फ सस्ती नोट्स नहीं थे, ये एक सोच थी। डॉक्टर राजारामन समझ गए थे कि भारत की असली ताकत उसके लोग हैं और अगर ज्ञान उन तक पहुंच ही नहीं पाएगा तो क्रांति कैसे होगी। सही बात है। 5 रुपए में उन्होंने ज्ञान को कुछ चुनिंदा लोगों के लिए एक्सक्लूसिव होने से निकालकर सबके लिए इंक्लूसिव बना दिया। और ये नोट्स इतने लोकप्रिय हुए कि जल्द ही उन्होंने प्रोग्रामिंग, न्यूमेरिकल मेथड्स और डिजिटल लॉजिक पर किताबें लिखी जो बेस्ट सेलर बनी और भारत में इंजीनियरों की पूरी एक पीढ़ी को पढ़ाया। तो IIT कानपुर में उन्होंने एक पूरी पीढ़ी तैयार कर दी, उन्हें पढ़ने के लिए किताबें भी दी। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई, वो भारत के भविष्य के सिलिकॉन वैली यानी बैंगलोर भी गए। हाँ, 1982 में वे IISc बैंगलोर आ गए और यहाँ उनका मिशन और भी बड़ा था। उन्होंने भारत के अपने पैरेलल कंप्यूटर बनाने के प्रोजेक्ट पर काम किया और SERC यानी सुपर कंप्यूटिंग एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर, उसका नेतृत्व किया।
इस सेंटर का मकसद क्या था? इसका मकसद था भारत के वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं को वो कंप्यूटिंग शक्ति देना जिसकी उन्हें बड़ी बड़ी खोजों के लिए जरूरत थी। और इसी दौरान भारत में आईटी इंडस्ट्री भी तेजी से बढ़ रही थी। अचानक से बहुत सारे प्रोग्रामर्स की जरूरत पड़ने लगी होगी। बिल्कुल, और ये एक बड़ी दुविधा थी। एक तरफ आईटी की मांग बढ़ रही थी और दूसरी तरफ आपके पास सिर्फ गिने चुने आईआईटीज थे जो कंप्यूटर इंजीनियर बना रहे थे। तो इस गैप को कैसे भरा जाए? उन्होंने एक और दूरदर्शी कदम उठाया। उन्होंने एमसीए यानी मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन डिग्री की शुरुआत की। अच्छा, ये एक गेम चेंजर था। इसने आर्ट्स और साइंस के छात्रों के लिए भी आईटी की दुनिया के दरवाजे खोल दिए। मतलब अब आपको आईटी में आने के लिए सिर्फ इंजीनियर होने की जरूरत नहीं थी। बिल्कुल। तो ये बिल्कुल उन 5 रुपए वाले नोट्स जैसा ही है। एक ही सोच कि ज्ञान को कुछ लोगों तक सीमित मत रखो, सबके लिए दरवाजे खोलो। एकदम सही। उनकी एक और बड़ी सोच स्वदेशी तकनीक को लेकर थी, खासकर सुपर कंप्यूटर के मामले में। सुपर कंप्यूटर क्यों इतने जरूरी थे उस समय? देखिए, सुपर कंप्यूटर को आप एक तरह से देश का दिमाग समझ सकते हैं। मौसम की सटीक भविष्यवाणी से लेकर राष्ट्रीय सुरक्षा और जटिल साइंटिफिक रिसर्च तक हर बड़े कैलकुलेशन के लिए इसकी जरूरत पड़ती है। डॉक्टर राजारमन का मानना था कि ये दिमाग हमें किसी से मांगना नहीं चाहिए, हमें अपना खुद का बनाना चाहिए। और उनके इसी जोर और प्रयासों ने सीडैक यानी सेंटर फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग के निर्माण का रास्ता साफ किया, जिसने भारत के मशहूर परम सुपर कंप्यूटरों को जन्म दिया। हाँ, तो उन्होंने अकेडमिक दुनिया की नींव तो रख दी, पर क्या ये ज्ञान सिर्फ क्लासरूम और लैब तक ही सीमित रहा? आम आदमी की जिंदगी पर इसका क्या असर हुआ? बहुत अच्छा सवाल है। उनका सबसे बड़ा प्रभाव शायद अकेडमिक जगत के बाहर ही था। 1985 से लेकर 2014 तक लगभग 30 सालों तक उन्होंने कर्नाटक सरकार के एक पैनल के सदस्य के रूप में काम किया। 30 साल? हाँ, और वहां उन्होंने 2 ऐतिहासिक प्रोजेक्ट्स का मार्गदर्शन किया, भूमि और कावेरी। ये भूमि और कावेरी प्रोजेक्ट्स क्या थे? भूमि प्रोजेक्ट जमीन के सारे रिकॉर्ड्स को कंप्यूटराइज करने के लिए था और कावेरी संपत्ति की रजिस्ट्रेशन से जुड़ा था। अच्छा। उस जमाने में जमीन के कागजात के लिए लोगों को दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ते थे, भ्रष्टाचार भी बहुत था। इन प्रोजेक्ट्स ने करोड़ों लोगों की जिंदगी आसान कर दी और पारदर्शिता लाई। ये भारत में ई गवर्नेंस के शुरुआती और सबसे सफल उदाहरणों में से हैं। तो इसका मतलब ये है कि आज हम जो यूपीआई और डिजिटल इंडिया का कमाल देखते हैं, उसकी नींव कहीं ना कहीं भूमि जैसे प्रोजेक्ट्स में ही रखी गई थी। आप ऐसा कह सकती हैं। उन्होंने बहुत पहले ही दिखा दिया था कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल आम नागरिक की समस्याओं को सुलझाने के लिए कैसे किया जा सकता है। इतने व्यस्त जीवन में क्या उनकी कोई व्यक्तिगत रुचियां भी थीं? हाँ, उन्हें शास्त्रीय संगीत सुनना बहुत पसंद था और फिक्शन व नॉन फिक्शन किताबें पढ़ना भी। वो एक संपूर्ण व्यक्तित्व के धनी थे। उनके योगदान को देश ने भी पहचाना। हाँ, 1976 में उन्हें विज्ञान का प्रतिष्ठित शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार मिला और 1998 में देश के तीसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। हम सभी सुनने वालों से ये जरूर कहेंगे कि आप समय निकालकर डॉक्टर राजारमन का वो लेख जरूर पढ़ें जिसका जिक्र हमने आज किया। ये भारत की कंप्यूटिंग कहानी है जिसे उसके मुख्य वास्तुकार ने खुद सुनाया है। इसका लिंक आपको शो नोट्स में मिल जाएगा। साथ ही उनकी सबसे नई किताब एनेक्डोट्स फ्रॉम द हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न कंप्यूटिंग जो जून 2024 में प्रकाशित हुई, उसका लिंक भी शो नोट्स में दिया गया है। डॉक्टर राजारमन के काम ने उस नींव को बनाया जिस पर आज भारत का इतना विशाल आईटी सर्विस उद्योग खड़ा है। आज जब हम उनके योगदान को याद करते हैं तो एक सवाल मन में आता है, क्या अगर वे आज हमारे बीच होते तो भारत की तकनीकी यात्रा के लिए अगली बड़ी चुनौती किसे बताते? शायद वो यही कहते कि अब दुनिया के लिए सर्विस तो बहुत कर ली, अब वक्त है भारत के लिए और भारत में आविष्कार करने का। वो अगली चुनौती होती। இன்னைக்கு நம்மளோட உரையாடல் ஒரு சோகமான செய்தியோட தொடங்குது. இந்திய கணினி அறிவியல் கல்வியோட பிதாமகர், அதாவது தந்தைன்னு எல்லோராலும் மதிக்கப்படுற டாக்டர் வைத்தியஸ்வரன் ராஜாராமன், அவர் சமீபத்தில் தன்னோட 92வது வயசில் பெங்களூரில் காலமானார். அதனால் அவருக்கு நம்மளோட ஆழ்ந்த மரியாதையை செலுத்துகிற வகையில் அவரோட பங்களிப்புகளையும் அவர் விட்டு சென்றிருக்கிற மிகப்பெரிய மரபையும் பற்றி கொஞ்சம் ஆழமாக பார்க்கலாம். ஒரு நிமிஷம் 1968க்கு போய் பாருங்க. இந்தியாவில் கணினி அறிவியல்னு ஒரு படிப்புக்கே பாட புத்தகங்கள் இல்லாத ஒரு காலம். அப்போ ஒரு பேராசிரியர் அவரோட சொந்த ஃபோர்ட்ரான் குறிப்புகளை அச்சிட்டு மாணவர்களுக்கு வெறும் 5 ரூபாய்க்கு கொடுத்துருக்காரு. அந்த ஒரு சின்ன செயல் எப்படி ஒரு பெரிய தேசத்தோட தொழில்நுட்ப தலையெடுத்தே மாத்துச்சுங்கிறது தான் இன்றைய கதை.
சாதாரண கட்டுரை இல்ல. IEEE கம்ப்யூட்டர் சொசைட்டியோட அழைப்பின் பேர்ல ரொம்பவே மதிக்கப்படுற IEEE Annals of the History of Computing அப்படிங்கிற ஆய்விதழ்ல 2014 வெளியானது. நீங்க கல்வித்துறையிலயோ அல்லது ஆராய்ச்சியிலயோ புதுசா இருந்தீங்கன்னா ஒரு மோனோகிராஃப் அப்படின்னா என்னன்னு சொல்றேன். அது ஒரு குறிப்பிட்ட தலைப்புல ஒரு நிபுணர் ரொம்ப ஆழமா விரிவாக எழுதுற ஒரு ஆய்வு தான். அப்படியா? ஆமா. இந்த மாதிரி ஒரு இதழ்ல கட்டுரை வெளியிடுறதே ஒரு மிகப்பெரிய கௌரவம். நிச்சயமா. அவரோட பயணத்தை கொஞ்சம் திரும்பி பார்க்கலாம். 1933 தமிழ்நாட்டில் ஈரோட்டில் பிறந்தவர். டெல்லி செயின்ட் ஸ்டீஃபன் கல்லூரியில் படித்து அப்புறம் பெங்களூரு இந்திய அறிவியல் கழகம் அதாவது IISCல பட்டம் வாங்குறார். அதுக்கப்புறம் அமெரிக்காவில் MITயில் முதுகலை பட்டம், விஸ்கான்சின் மேடிசன் பல்கலைக்கழகத்தில் முனைவர் பட்டம்னு அவரோட கல்வி பயணம் ரொம்ப வலுவா இருந்திருக்கு. இங்க தான் ஒரு முக்கியமான திருப்புமுனை நடக்குது. அவர் தன்னோட முனைவர் பட்டத்தை அடாப்டிவ் கண்ட்ரோல் சிஸ்டம்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்துல தான் வாங்குறார். அவர் இந்தியாவுக்கு திரும்பி IIT கான்பூர்ல பேராசிரியரா சேரும்போது அவர் எலக்ட்ரிக்கல் இன்ஜினியரிங் துறையில தான் இருந்தார். ஓஹோ. ஆனா 1965 ஒரு தீர்க்க தரிசனமான முடிவு எடுக்கிறார். கணினி அறிவியல் துறைக்கு மாறுறார். ஒரு நிமிஷம். 1965 இந்தியாவில் கணினி அறிவியல்னு ஒரு தனி துறையே இருந்ததா? அது ஒரு பெரிய படிப்பாகவே பார்க்கப்படாத காலமாச்சே. மிக சரியான கேள்வி. அதுதான் விஷயமே. அப்போ அது ஒரு முழுமையான துறையாகவே இல்லை. எலக்ட்ரிக்கல் இன்ஜினியரிங்ல ஒரு பகுதியாக தான் இருந்துச்சு. அப்படியா? அந்த சூழல்ல ஒரு துறையிலிருந்து இன்னொரு துறைக்கு மாறுறது சாதாரண விஷயம் இல்லை. அது எதிர்காலத்தை கணிச்சு எடுக்கப்பட்ட ஒரு மிகப்பெரிய ரிஸ்க். அந்த ரிஸ்க் தான் இந்தியாவில் முதல் முறையா கணினி அறிவியலுக்கான ஒரு முழுமையான கல்வி திட்டத்தை உருவாக்க காரணமா இருந்துச்சு. ஓ. முதல்ல MTech அப்புறம் BTechனு IIT கான்பூர்ல ஒரு புதிய சகாப்தத்தை அவர் தொடங்கி வச்சார். அப்போ அந்த காலகட்டத்தில் IIT கான்பூருக்கு ஒரு IBM மெயின் ஃப்ரேம் கணினி வந்ததா ஒரு சுவாரஸ்யமான கதை இருக்கு. அது வெறும் ஆராய்ச்சிக்கு மட்டும்தானே வந்திருக்கணும்? ஆமா. ஆகஸ்ட் 1963 IBM 1620 அப்படிங்கிற ஒரு கணினி IIT கான்பூருக்கு வந்தது. ஒரு கல்வி நிறுவனத்தில் நிறுவப்பட்ட ஃபோட்ரான் கம்பைலர் கொண்ட முதல் கணினி அது. சரி. ஆனா டாக்டர் ராஜாராமன் அதை வெறும் ஆராய்ச்சிக்கு மட்டும் பயன்படுத்தல. இங்க தான் அவரோட தொலைநோக்கு பார்வையை வெளிப்படுது. அவர் என்ன செஞ்சார்னா, இந்த கணினி இங்க இருக்கு, ஆனா இதை பயன்படுத்த தெரிஞ்ச ஆட்கள் வெளியில இல்லையேன்னு யோசிச்சார். உடனே தொழிற்துறையில இருந்தும் மற்ற ஆராய்ச்சி மையங்கள்ல இருந்தும் புரோகிராமர்களை வரவழைச்சு 10 நாள் ஃபோட்ரான் பயிற்சி வகுப்புகளை நடத்த ஆரம்பிச்சார். ஒரு நிமிஷம். நம்மில் பலர் பேர் பைத்தான், ஜாவா ஸ்கிரிப்ட்னு கேட்டு வளர்ந்தவங்க. அந்த காலத்துல ஃபோர்ட்ரான்ங்கிறது எந்த அளவுக்கு முக்கியமான ஒரு விஷயம்? ஒரு பல்கலைக்கழக கணினியில் அதுக்கு கம்பைலர் இருக்கிறது ஏன் ஒரு பெரிய திருப்புமுனையா பார்க்கப்பட்டுச்சு? அருமையான கேள்வி. ஃபோட்ரான் ஃபார்முலா டிரான்ஸ்லேஷன். அதுதான் அந்த காலத்துல அறிவியல் மற்றும் பொறியியல் கணக்கீடுகளுக்கான உலக மொழி. ஓஹோ. இன்னைக்கு எப்படி ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ்க்கு பைத்தான் முக்கியமோ அப்படி அன்னைக்கு பெரிய இன்ஜினியரிங் பிரச்சனைகளை தீர்க்க ஃபோர்ட்ரான் ரொம்ப அவசியம். ஒரு பல்கலைக்கழகத்துல அதுக்கான கம்பைலர் இருக்கிறதுங்கிறது மாணவர்களும் ஆராய்ச்சியாளர்களும் வெறும் தியரியை மட்டும் படிக்காம நேரடியா தங்களோட சிக்கலான கணக்குகளை போட்டு பார்க்க ஒரு வாய்ப்பை உருவாக்குச்சு. அதேதான். அது ஒரு புரட்சி. அப்போ அந்த பயிற்சி வகுப்புகளோட தாக்கம் அது எப்படி இருந்தது? அது வெறும் பயிற்சி வகுப்பு இல்ல, அது ஒரு சுற்றுச்சூழல் அமைப்போட, அதாவது ஒரு ஈகோ சிஸ்டமோட உருவாக்கம். புரியுது. ஒரு பல்கலைக்கழக கணினியில தொழில்துறையை சேர்ந்தவங்களுக்கு பயிற்சி கொடுக்கறதன் மூலமா ராஜாராமன் கல்வித்துறைக்கும் தொழில்துறைக்கும் நடுவில் இருந்த சுவரையே உடைச்சார். ஆமா. வேற யாரும் இந்த பத்தி யோசிக்கிறதுக்கு முன்னாடியே அவர் செஞ்சு முடிச்சார். அந்த ஒரு செயல்தான் பிற்காலத்துல டாடா கன்சல்டன்சி சர்வீசஸ் அதாவது TCS அப்புறம் HCL டெக் போன்ற நிறுவனங்கள் உருவாக தேவையான திறமையான மனித வளத்தை விதைச்சது. அப்போ இன்ஃபோசிஸ் நிறுவனர் நாராயணமூர்த்தி கூட அவரோட மாணவர்களில் ஒருத்தர் தானே? ஆமா. அவரே ராஜாராமனை ஒரு அறிஞர், ஒரு பண்பாளர் மற்றும் ஒரு வழிகாட்டி அப்படின்னு நினைவு கூர்ந்ததிலே ஆச்சரியமே இல்லை. இந்த அறிவை எல்லோருக்கும் கொண்டு சேர்க்கணுங்கிற எண்ணம் தான் அந்த 5 ரூபாய் நோட்ஸ் கதைக்குள்ளேயும் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். அது வெறும் பாடப்புத்தகம் இல்லாததால செஞ்ச ஒரு ஏற்பாடு தானா? அதுக்கு மேலேயும் அதுக்கு அர்த்தம் இருக்கு. ஆமா, 1960களில் பாடப்புத்தகங்கள் இல்லை. அதனால தன்னோட குறிப்புகளை 1968 அச்சிட்டு வித்தார். ஆனா இதுல நம்ம கவனிக்க வேண்டிய விஷயம் என்னன்னா, அந்த காலகட்டத்துல இந்தியாவில் இருந்த கணினிகள் ரொம்ப பழமையானவை. அமெரிக்காவில் 1971 புழக்கத்திலிருந்து நீக்கப்பட்ட IBM 1041 போன்ற கணினிகள் தான் இங்க அதிகம் பயன்படுத்தப்பட்டுச்சு. வளங்கள் ரொம்ப குறைவு. சரி. அந்த சூழல்ல சிக்கலான கணினி அறிவியலை எல்லோருக்கும் புரியுற மாதிரி எளிமையான மொழியில குறைஞ்ச விலையில கொடுக்கறதுங்கிறது அறிவை ஜனநாயகப்படுத்துற ஒரு செயல். ஓ,
அறிவை ஜனநாயகப்படுத்துறது. ஆமா, அதுதான் அவரோட மிகப்பெரிய பங்களிப்பு. அந்த நோட்ஸ் அவ்வளோ பிரபலமானதுனால தான் அவரை புத்தகங்கள் எழுதச் சொல்லி பதிப்பகங்கள் அணுகுனாங்க. அவர் எழுதின புத்தகங்கள் இந்தியா முழுக்க புரோகிராமிங் கத்துக் கொடுக்கிற முறையே மாத்தி அமைச்சது. ஐஐடி கான்பூருக்கு பிறகு அவரோட பயணம் பெங்களூர் IIScக்கு நகருது. அங்கேயும் அவரோட பங்களிப்பு ரொம்ப முக்கியமானதுன்னு சொல்றாங்க. ஆமா, 1982ல IIScக்கு மாறின பிறகு அவரோட கவனம் இன்னும் பெரிய விஷயங்கள் மேல திரும்புது. இணை கணினிகள், அதாவது பேரலல் கம்ப்யூட்டர்ஸை உருவாக்குறதுல கவனம் செலுத்துறார். SCRC சூப்பர் கம்ப்யூட்டிங் மையத்தை வழிநடத்துறார். இதனால என்ன ஆச்சு? இதன் மூலமா இந்தியாவோட ஆராய்ச்சி திறன் பல மடங்கு அதிகரிக்குது. ஆனா அவர் வெறும் ஒரு ஆராய்ச்சியாளர் மட்டும் இல்ல, அவர் ஒரு நிறுவனத்தை உருவாக்குபவர். எதை வச்சு எப்படி சொல்றீங்க? 2 முக்கியமான விஷயங்கள் இருக்கு. ஒன்னு, 1980ஸ்கள்ல இந்தியாவோட தகவல் தொழில்நுட்பத்துறை மெதுவா வளர ஆரம்பிக்குது. ஆனா அதுக்கு தேவையான திறமையான ஆட்கள் இல்ல. சரி. அப்போதான் அவர் MCA, அதாவது மாஸ்டர் ஆஃப் கம்ப்யூட்டர் அப்ளிகேஷன்ஸ் பட்டப்படிப்பை தொடங்கணும்னு ஒரு யோசனையை முன்வைக்கிறார். வெறும் புரோகிராமர்களை மட்டும் உருவாக்காம சிஸ்டம்ஸ் அனாலிசிஸ் மற்றும் டிசைன்ல திறமையானவங்களை உருவாக்கணும்னு நினைச்சார். அது ஒரு தீர்க்க தரிசனமான நடவடிக்கை. அருமை. இரண்டாவது விஷயம் இன்னும் முக்கியமானது. 1970கள் 80கள்ல அமெரிக்கா போன்ற நாடுகள் உயர் தொழில்நுட்பங்களை, குறிப்பா சூப்பர் கணினிகளை இந்தியாவுக்கு தர மறுத்தாங்க. ஒரு விதமான தொழில்நுட்ப தடையா? ஆமா, ஒரு தடை இருந்துச்சு. அப்போ நாம ஏன் மத்தவங்கள நம்பி இருக்கணும், நமக்கான சூப்பர் கணினிகளை நாமளே உருவாக்கணும்னு அவர் ரொம்ப வலுவா வாதாடினார். அந்த வாதத்தோட விளைவுதான் CDAC, அதாவது CDAC உருவானதா? மிகச்சரியா சொன்னீங்க. அந்த வாதத்தோட விளைவாதான் CDAC நிறுவனம் உருவாக்கப்பட்டுச்சு. சென்டர் ஃபார் தி டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் அட்வான்ஸ்ட் கம்ப்யூட்டிங். கரெக்ட். அது இந்தியா தன்னோட சொந்த உயர் செயல்திறன் கணினிகளை உருவாக்க அமைக்கப்பட்ட ஒரு தேசிய இயக்கம். அப்ப தொழில்நுட்பத்துல தற்சார்பு அடைய இது ஒரு முக்கியமான படி. நிச்சயமா. இன்னைக்கு நாம பாக்குற பேரம் சூப்பர் கணினிகளுக்கு அதுதான் தொடக்க புள்ளி. அவரோட மோனோகிராஃப்ல ஒரு முக்கியமான விஷயத்த சொல்றார். என்ன அது? அரசாங்கத்தோட கொள்கைகளும் அரசியல் சூழலும் தான் இந்திய கணினித்துறையோட வளர்ச்சியை வடிவமைச்சது. குறிப்பா 1970, 1988, அப்புறம் 1991, 98ல வந்த கொள்கை மாற்றங்கள் பெரிய திருப்பு முனைகளா இருந்துச்சுன்னு பதிவு பண்றார். கல்வி, ஆராய்ச்சி, கொள்கை உருவாக்கம்னு போயிட்டு இருந்தவர் திடீர்னு கர்நாடகாவில் மின் ஆளுமை திட்டங்கள்ல கவர்னன்ஸ்ல பங்களிச்சிருக்கார். அது ஒரு பெரிய துறை மாற்றம் இல்லையா? அதுவும் நிலப்பதிவேடுகளே டிஜிட்டல் ஆக்குற மாதிரி ஒரு சிக்கலான விஷயம். அதுல என்ன சவால்கள் இருந்திருக்கும்? மிகப்பெரிய சவால்கள். யோசிச்சு பாருங்க. பல 100 வருஷமா காகிதத்தில் இருந்த பல குளறுபடிகள் நிறைந்த நிலப்பதிவேடுகளை கணினிமயமாக்குறது எவ்வளவு கஷ்டம். ஆமாம். அதிகாரிகளோட எதிர்ப்பு, அரசியல் தலையீடுகள்னு நிறைய இருந்திருக்கும். ஆனா 1985ல இருந்து 2014 வரைக்கும் மாநில அரசோட குழுவுல ஒரு உறுப்பினரா இருந்து பூமி, காவேரி போன்ற வரலாற்று சிறப்புமிக்க திட்டங்களை அவர் வழிநடத்தினார். இந்த திட்டங்களோட பலன் என்ன? இந்த திட்டங்கள் நிலப்பதிவேடுகளையும் சொத்து பதிவுகளையும் எளிமைப்படுத்தி ஊழலை குறைச்சு சாதாரண மக்களுக்கு அதிகாரம் கொடுத்துச்சு. இது அவரோட பன்முகத்தன்மைக்கு ஒரு சிறந்த உதாரணம். தொழில்நுட்பத்தை எப்படி மக்களோட அன்றாட பிரச்சனைகளை தீர்க்க பயன்படுத்தலான்னு செஞ்சு காட்டினார். சரியா சொன்னீங்க. இவ்வளவு வேலைகளுக்கு நடுவுல அவருக்கு வேற எந்த விஷயங்கள்ல ஆர்வம் இருந்துச்சு? இந்த அழுத்தமான ஒரு தேசத்தையே உருவாக்குற வேலைகளுக்கு நடுவுல அவர் கர்நாடக சங்கீதம் கேட்பதுல மன அமைதியை தேடினார்னு சொல்றாங்க. ஓ. அது மட்டும் இல்லாம புனை கதை மற்றும் பிற புத்தகங்களை படிக்கிறதுலயும் அவருக்கு ஆர்வம் இருந்திருக்கு. இவ்ளோ பெரிய பொறுப்புல இருந்த ஒருத்தர் கலையிலையும் இலக்கியத்திலையும் ஈடுபாட்டோடு இருந்தது அவரோட ஆளுமை எவ்வளவு சமநிலையோட இருந்துச்சுன்றத காட்டுது. ஆமாம். இவ்ளோ பங்களிப்புகளுக்கு நிச்சயம் பெரிய அங்கீகாரங்கள் கிடைச்சிருக்கும். கண்டிப்பா. 1976ல அறிவியல் மற்றும் தொழில்நுட்பத்துக்கான இந்தியாவோட மிக உயரிய விருதான சாந்தி ஸ்வரூப் பட்நாகர் பரிசு அவருக்கு வழங்கப்பட்டுச்சு. சரி. 1998ல இந்திய அரசோட 3வது உயரிய சிவிலியன் விருதான பத்மபூஷன் விருது அவரை தேடி வந்தது. இது போக IIT கான்பூர் உட்பட பல நிறுவனங்கள் அவருக்கு கௌரவ டாக்டர் பட்டங்கள் வழங்கி சிறப்பிச்சிருக்கு. இந்த அங்கீகாரங்கள் எல்லாம் ஒரு தனி மனுஷனா இருந்து ஒரு முழு துறைக்கே அளித்தலம் போட்ட அவரோட உழைப்புக்கு கிடைச்ச சான்றுகள். இந்த உரையாடல் உங்களுக்கு ஆர்வத்தை தூண்டியிருந்தா டாக்டர் ராஜாராமன் எழுதின அந்த அசல் மோனோகிராஃப் கட்டுரையை நீங்க நேரம் ஒதுக்கி படிக்கணும்னு நாங்க கேட்டுக்கிறோம். ஹிஸ்டரி ஆஃப் கம்ப்யூட்டிங் இன் இந்தியா 1955 to 2010 அப்படிங்கிற தலைப்புல வெளியான அந்த கட்டுரையை படிக்கிறதுக்கான இணைப்பு கீழே குறிப்புகள்ல, அதாவது ஷோ நோட்ஸ்ல கொடுத்துருக்கோம்.
அதோட அவரை கடைசியா எழுதின ஒரு புத்தகம் ANECDOTES from the history of modern computing. இது ஜூன் 2024 தான் வெளியானது. கணினி உலகத்தோட பலரும் அறியாத சுவாரஸ்யமான கதைகளை இதுல பதிவு செஞ்சிருக்கார். அதுக்கான இணைப்பும் கீழே குறிப்புகள்ல இருக்கு. ஒரு தனிநபரோட தொலைநோக்கு பார்வை வெறும் ஒரு நிறுவனத்தை மட்டும் இல்ல, ஒரு தேசத்தோட எதிர்காலத்தையே வடிவமைக்க முடியும். டாக்டர் ராஜாராமனோட வாழ்க்கை அந்த உண்மைக்கு ஒரு மிகச்சிறந்த சான்றா என்றென்றும் நிலைச்சு நிற்கும். ನಮಸ್ಕಾರ. ಭಾರತೀಯ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ವಿಜ್ಞಾನ ಶಿಕ್ಷಣದ ಪಿತಾಮಹ ಅಂತಲೇ ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಕರೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಡಾಕ್ಟರ್ ವೈದ್ಯೇಶ್ವರನ್ ರಾಜಾರಾಮನ್ ಅವರು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅಂದರೆ ನವೆಂಬರ್ 8, 2025 ನಮ್ಮನ್ನಗಲಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ 92ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ. ಹೌದು. ಈ ಸುದ್ದಿ ಕೇಳಿ ನಿಜಕ್ಕೂ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮನಸ್ಸಿಗೂ ತುಂಬ ನೋವಾಗಿದೆ. ಅವರ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಶಾಂತಿ ಸಿಗಲಿ. ಅವ್ರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಆಳವಾದ ಸಂತಾಪಗಳು. ಖಂಡಿತ. ಇದು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ತುಂಬಾನೇ ದೊಡ್ಡ ನಷ್ಟ. ಇಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ಸ್ಮರಿಸುವುದಕ್ಕಿಂತ ಅವರ ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಚಿಂತನೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದೇ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದಾದ ನಿಜವಾದ ಗೌರವ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇವತ್ತು ನಾವು ಕೇವಲ ಅವರ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡದೆ ಅವರು ಬರೆದ ಒಂದು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖ ಸಂಶೋಧನಾ ಲೇಖನದ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ತೀರ್ಮಾನಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಹೌದು, ಇದೊಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಲೇಖನ ಅಲ್ಲ. ಅಲ್ವೇ ಅಲ್ಲ. 2014ರಲ್ಲಿ IEEE Annals of the History of Computing ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಜರ್ನಲ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾಗಿತ್ತು. ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾಗೋದು ಅಂದ್ರೆ ಸುಲಭದ ಮಾತಲ್ಲ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸತ್ಯಾಂಶವನ್ನು ತಜ್ಞರು ಕಠಿಣವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸ್ತಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಆ ಜರ್ನಲ್ನವರೇ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜಾರಾಮನ್ ಅವರನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಿ ಭಾರತದ ಕಂಪ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಇತಿಹಾಸದ ಬಗ್ಗೆ ನೀವೇ ಬರೆಯಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ಇದು ಅವರ ಸ್ಥಾನಮಾನಕ್ಕೆ ಹಿಡಿದ ಕೈಗನ್ನಡಿ. ಕರೆಕ್ಟ್. ಆ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ಅವರು ಹೇಳೋ ಒಂದು ಮಾತು ಇವತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಚರ್ಚೆಗೆ ಅಡಿಪಾಯ. ಏನಾ ಮಾತು? ಅವರು ವಾದಿಸೋದು ಏನಂದ್ರೆ, ಭಾರತದ ಟೆಕ್ ಕ್ರಾಂತಿಯ ಕಥೆ ಕೇವಲ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಗಳಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ನೀತಿ ನಿಯಮಗಳ ಚಕ್ರವ್ಯೂಹವನ್ನು ಭೇದಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದ ಒಂದು ರೋಚಕ ಪಯಣ ಅಂತ. ಅವರ ಜೀವನದ ಘಟನೆಗಳೇ ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿ. ಹಾಗಾದರೆ ಅವರ ಜೀವನದ ಮೂಲಕವೇ ಈ ವಾದವನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ಅವರು ಹುಟ್ಟಿದ್ದು 1933ರಲ್ಲಿ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಈರೋಡ್ನಲ್ಲಿ. ಹೌದು. ನಂತರ ದೆಹಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನ ISICಯಲ್ಲಿ ಓದಿ ಅಮೆರಿಕದ MIT ಮತ್ತು ವಿಸ್ಕಾನ್ಸಿನ್ ಮ್ಯಾಡಿಸನ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆದ್ರು. ಅದೇ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ವಿಷಯ ಇದೆ. ಅವರ PhD ಇದ್ದಿದ್ದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ನಲ್ಲ. ಅಲ್ಲ, ಅದು ಅಡ್ಯಾಪ್ಟಿವ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ. ಆಕ್ಚುಲಿ 1965ರಲ್ಲಿ ಅವರು IIT ಕಾನ್ಪುರ್ಗೆ ಬಂದಾಗ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಕಡೆಗೆ ಹೊರಳಿದ್ದು ಭಾರತದ ಪಾಲಿಗೆ ಒಂದು ಐತಿಹಾಸಿಕ ತಿರುವು ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆಗ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ಗೆ ಅಂತ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಕೋರ್ಸ್ ಇರಲೇ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಇರಲೇ ಇಲ್ಲ. ಆಗ ಅವರು ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದೇ ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಮೊದಲು MTech, ಆಮೇಲೆ BTech. ಭಾರತದ IT ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಅಡಿಪಾಯವನ್ನ ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ರು. ಸರಿ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಕತೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ತುಂಬಾ ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕವಾಗುತ್ತೆ. IIT ಕಾನ್ಪುರ್ಗೆ ಆಗ ತಾನೇ ಒಂದು ಹೊಸ IBM ಮೇನ್ ಫ್ರೇಮ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಬಂದಿತ್ತು. ಆ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಅದೊಂದು ಅದ್ಭುತ. ಹೌದು, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅದನ್ನ ಕೇವಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸಬಹುದಿತ್ತು. ಖಂಡಿತ. ಆದ್ರೆ ರಾಜಾರಾಮನ್ ಅವರ ಯೋಚನೆಯೇ ಬೇರೆ ಇತ್ತು. ಅವರು ಈ ಜ್ಞಾನ ಕೇವಲ ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಬಾರದು ಅಂತ ತೀರ್ಮಾನಿಸಿದ್ರು. ತಕ್ಷಣವೇ ಅವರು ಇಡೀ ದೇಶದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಮತ್ತು ರಿಸರ್ಚ್ ಸೆಂಟರ್ಗಳಿಂದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮರ್ಗಳನ್ನ ಕರೆದು 10 ದಿನಗಳ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಾಗಾರಗಳನ್ನು ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು. ಯಾವ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ? ಫೋರ್ಟ್ರಾನ್ ಅನ್ನುವುದು ಆಗಿನ ಕಾಲದ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಭಾಷೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿ ನೀಡಿದ್ರು. ಇದರ ಪರಿಣಾಮ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತು? ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ. ಆ 10 ದಿನಗಳ ಕೋರ್ಸ್ಗಳು ಕೇವಲ ತರಬೇತಿ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಅದು ಅಕಾಡೆಮಿ ಮತ್ತು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ನಡುವೆ ಒಂದು ಸೇತುವೆಯನ್ನೇ ನಿರ್ಮಿಸಿತು. ಹೌದಾ? ಹೌದು. ಇವತ್ತು ನಾವು ಕಾಣುವ TCS, HCL ನಂತಹ ದೊಡ್ಡ ಕಂಪನಿಗಳ ಆರಂಭಿಕ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ತರಬೇತಿ ಪಡೆದಿದ್ದು ಅಲ್ಲಿಯೇ. ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ಸಂಸ್ಥಾಪಕರಾದ ನಾರಾಯಣ ಮೂರ್ತಿಯವರು ಕೂಡ ಅವರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯಾಗಿದ್ರು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದೆ. ನಿಜ.
ಮೂರ್ತಿಯವರು ಇವತ್ತಿಗೂ ರಾಜಾರಾಮನ್ ಅವರನ್ನು ಒಬ್ಬ ವಿದ್ವಾಂಸ, ಸಜ್ಜನ ಮತ್ತು ನನಗೆ ದಾರಿ ತೋರಿದ ಗುರು ಅಂತ ನೆನಪಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಇದು ಅವರ ದೂರದೃಷ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಾಕ್ಷಿ. ಇಲ್ಲಿಂದಲೇ ನಾವು ಅವರ ಲೇಖನದ ಮುಖ್ಯ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸಬಹುದು. ಅಂದ್ರೆ, ಮೊದಲು ದೇಶಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲವನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡುವುದು. ಆದರೆ ಆಗ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಇತ್ತಲ್ಲ. ಹೌದು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಹೇಳಿಕೊಡಲು ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕಗಳೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಖಂಡಿತ, ಇವತ್ತಿನ ಹಾಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಿಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಆಗ ಇವತ್ತಿನ ಹಾಗೆ ಅಮೆಜಾನಲ್ಲಿ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿ ಪುಸ್ತಕ ತರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನ ನೀಗಿಸಲು 1968ರಲ್ಲಿ ಪ್ರೊ ರಾಜಾರಾಮನ್ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ಐಡಿಯಾ ಮಾಡಿದ್ರು. ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು? ಅವರು ತಮ್ಮದೇ ಕ್ಲಾಸ್ ನೋಟ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಿಸಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮಾರಲು ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು. ಎಷ್ಟು ಬೆಲೆಗೆ? ಕೇವಲ 5 ರೂಪಾಯಿಗೆ. ಕೇವಲ 5 ರೂಪಾಯಿ? ನಂಬೋಕೆ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಭಾರತದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ಬಹುತೇಕ ಉಚಿತವಾಗಿ ಹಂಚುತ್ತಿದ್ರು. ಅದ್ಭುತ ಅಲ್ವಾ? ಅವರ ಉದ್ದೇಶ ಹಣ ಮಾಡುವುದಾಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಜ್ಞಾನವನ್ನ ಹಂಚೋದಾಗಿತ್ತು. ಆ 5 ರೂಪಾಯಿಯ ನೋಟ್ಸ್ ಏನಾಯ್ತು? ಅದೊಂದು ಸಣ್ಣ ಕ್ರಾಂತಿಯನ್ನೇ ಮಾಡ್ತು ಭಾರತದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ. ಅದು ಎಷ್ಟು ಜನಪ್ರಿಯವಾಯ್ತಂದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಅದನ್ನೇ ಪುಸ್ತಕ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ರು. ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್, ನ್ಯೂಮೆರಿಕಲ್ ಮೆಥಡ್ಸ್, ಡಿಜಿಟಲ್ ಲಾಜಿಕ್, ಹೀಗೆ ಅವರು ಬರೆದ 20ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪುಸ್ತಕಗಳು ಗೊತ್ತಾ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಗಳ ಪಾಲಿಗೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಆದವು. ಸರಿ, ಹೀಗೆ ಅವರು ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲದ ಅಡಿಪಾಯ ಹಾಕಿದ್ರು. ಆದರೆ ಅವರ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ಹೇಳುವ ಹಾಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ನೀತಿಗಳು ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೇಗೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗಲು ಶುರುವಾದವು? ಅದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೆಯದು 1970ರ ದಶಕ. ಆಗ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಸ್ವಾವಲಂಬನೆಯ ನೀತಿಯನ್ನ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಒಂದು ನಿಮಿಷ, ಸ್ವಾವಲಂಬನೆ ಅಥವಾ ಸೆಲ್ಫ್ ರಿಲಯನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಕೆಟ್ಟದಾಯ್ತಾ? ನಮ್ದೇ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಕಟ್ಟೋದು, ವಿದೇಶಿ ಅವಲಂಬನೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋದು ಒಳ್ಳೆಯ ಉದ್ದೇಶ ಅಲ್ವಾ? ಉದ್ದೇಶ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಒಳ್ಳೆಯದೇ ಇತ್ತು. ಆದರೆ ಅದರ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜಾರಾಮನ್ ತಮ್ಮ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ಡೇಟಾ ಸಮೇತ ವಿವರಿಸ್ತಾರೆ. ಹೇಗೆ? ಆಗಿನ ನೀತಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗಳನ್ನ ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದರ ಮೇಲೆ ಕಠಿಣ ನಿಯಂತ್ರಣಗಳನ್ನು ಹೇರಲಾಯಿತು. ಇದರಿಂದ ಏನಾಯ್ತು? ಒಂದು ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಅಥವಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಬೇಕೆಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅರ್ಜಿ ಹಾಕಿ ಅದು ಪಾಸ್ ಆಗಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕೈ ಸೇರಲು 1 ರಿಂದ 3 ವರ್ಷ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. 3 ವರ್ಷ? ಅಷ್ಟರಲ್ಲ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಹಳೆಯದಾಗಿರುತ್ತಿತ್ತಲ್ವಾ? ಇದು ನಮ್ಮನ್ನು ತುಂಬಾ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ತಳ್ಳಿತು. ದೇಶೀಯ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುವ ಗುರಿಯಿದ್ರೂ ಅದು ನಮ್ಮನ್ನು ಜಾಗತಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಓಟದಿಂದ ಬಹುತೇಕ ಹೊರಗಿಟ್ಟಿತು. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಉದ್ದೇಶದ ನೀತಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನೇ ಹೇಗೆ ಕುಂಠಿತಗೊಳಿಸ್ತು ಅಂತ ಅವ್ರು ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಕರೆಕ್ಟ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಅಡೆತಡೆಯನ್ನ ದಾಟಿದ್ದು ಹೇಗೆ? ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದ್ದು 1980ರ ದಶಕದ ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು 1991ರ ಉದಾರೀಕರಣ ನೀತಿಗಳು. ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿಯವರ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ನಂತರದ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಆಮದನ್ನು ಸುಲಭಗೊಳಿಸಿದ್ವು, ತೆರಿಗೆಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದ್ವು. ಅದರ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಅವರು ತಮ್ಮ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಸೆರೆ ಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವಾಗ ಆಮದು ಸುಲಭವಾಯಿತೋ ಆಗಲೇ ಭಾರತದ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ರಫ್ತುದ್ಯಮ ಗಗನಕ್ಕೇರಿದ್ದು. ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜಾರಾಮನ್ರಂತವರು 60-70ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಗಳ ಪಡೆಗೆ ಆಗ ಸರಿಯಾದ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿತು. ಅಂದ್ರೆ ಇಂಜಿನ್ ಮೊದಲೇ ಸಿದ್ಧವಾಗಿತ್ತು, ಆದರೆ ಪಾಲಿಸಿಯ ಬ್ರೇಕ್ಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು ಹಾಕಿದಾಗಷ್ಟೇ ಅದು ವೇಗವಾಗಿ ಚಲಿಸಲು ಶುರುವಾಯಿತು. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ. ಇದನ್ನೇ ಅವರು ತಮ್ಮ ಲೇಖನದ ಮೂಲಕ ಹೇಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸೋದು. ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಡುವವರು ಕೇವಲ ತಾಂತ್ರಿಕ ಅಂಶಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಸಾಲದು, ಅದರ ಸುತ್ತ ಇರುವ ಸಾಮಾಜಿಕ ರಾಜಕೀಯ ಸಂದರ್ಭವನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎನ್ನುವುದು ಅವರು ನೀಡುವ ಪಾಠ. IIT ಕಾನ್ಪುರದ ನಂತರ 1982ರಲ್ಲಿ ಅವರು ಬೆಂಗಳೂರಿನ IIScಗೆ ಬಂದರು. ಹೌದು. ಆಗ ಅವರ ಗಮನ ಹರಿದಿದ್ದು ಇದೇ ಸ್ವಾವಲಂಬನೆಯ ಇನ್ನೊಂದು ಮುಖದ ಕಡೆಗೆ. ಅದು ಸೂಪರ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗಳ ವಿಷಯವೇ? ಹೌದು. 80ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕ ನಮಗೆ ಸೂಪರ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗಳನ್ನು ಕೊಡಲು ನಿರಾಕರಿಸಿತು. ಆಗ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜಾರಾಮನ್ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವೇ ನಮ್ಮ ಸೂಪರ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಬಲವಾಗಿ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದರು. ಅವರ ಒತ್ತಾಯದ ಫಲವೇ CDAC ಸ್ಥಾಪನೆ. ನಿಜ. ಅವರ ಈ ಒತ್ತಾಯ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದ ಫಲವೇ CDAC ಅಂದ್ರೆ ಸೆಂಟರ್ ಫಾರ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಕಂಪ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸ್ಥಾಪನೆ. ಪರಂ ಸರಣಿ ಸೂಪರ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗಳು. ಹೌದು. ಪರಂ ಸರಣಿಯ ಸೂಪರ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿ ಭಾರತ ಜಗತ್ತಿಗೆ ತನ್ನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ದು ಇದೇ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮೂಲಕ. ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ಹಬ್ಬಿತು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಜೊತೆಗೂ ಅವರು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರು. ಹೌದು.
1985ರಿಂದ 2014ರವರೆಗೆ ಸುಮಾರು 30 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಅವರು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸಲಹಾ ಸಮಿತಿಯ ಸದಸ್ಯರಾಗಿದ್ರು. ಇವತ್ತು ನಾವು ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡುವ ಭೂಮಿ ಮತ್ತು ಕಾವೇರಿ ಯೋಜನೆಗಳ ಹಿಂದೆ ಅವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಇತ್ತು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದೇನೆ. ನಿಜ. ಆ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಡಿಜಿಟಲೀಕರಣ ಯೋಜನೆಗಳ ಹಿಂದಿನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕ ಶಕ್ತಿ ಅವರೇ. ಸರ್ಕಾರದ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಮೂಲಕ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ತಲುಪಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಅವರ ಕನಸಾಗಿತ್ತು. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಸಾಧನೆಗಳ ನಡುವೆ ಅವರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಹೇಗಿತ್ತು? ಅತ್ಯಂತ ಸರಳ. ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂಗೀತ ಮತ್ತು ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಓದುವುದು ಅವರ ಪ್ರಮುಖ ಹವ್ಯಾಸಗಳಾಗಿದ್ವು. ಆದರೆ ಅವರ ಸಾಧನೆಗಳು ಅಸಾಮಾನ್ಯ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಅಸಾಮಾನ್ಯ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ದೇಶ ಅವರನ್ನು ಗುರುತಿಸಿತು. 1976ರಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಶಾಂತಿ ಸ್ವರೂಪ್ ಭಟ್ನಾಗರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಮತ್ತು 1998ರಲ್ಲಿ ಪದ್ಮಭೂಷಣ. ಹೌದು, ಭಾರತದ 3ನೇ ಅತ್ಯುನ್ನತ ನಾಗರಿಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯಾದ ಪದ್ಮಭೂಷಣ ಅವರಿಗೆ ಸಂದಿವೆ. ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಅವರ ಜೀವನ ಮತ್ತು ಅವರ ಲೇಖನ ಎರಡು ಒಂದೇ ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳ್ತವೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಹೇಗೆ? ಮೊದಲು ಜ್ಞಾನದ ಅಡಿಪಾಯವನ್ನು ಕಟ್ಟಿ, ನಂತರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ, ತಂತ್ರಗಾರಿಕೆಯಿಂದ ನಿವಾರಿಸಿಕೊಂಡು ಮುನ್ನಡೆಯುವುದು. ಖಂಡಿತ. ಅವರ ಲೇಖನ ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದುಕೊಂಡಿರುವ ಯುವಕ ಯುವತಿಯರಿಗೆ ಒಂದು ಪಾಠ ಪುಸ್ತಕದಂತಿದೆ. ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ಹೇಗೆ ಆಳವಾಗಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಯಾಮಗಳಿಂದ ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮಾದರಿ. ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋರಿಗೆ ನಾವೊಂದು ವಿಷಯ ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀವಿ. ಈ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಚಂದಾದಾರರಾಗುತ್ತೀರೋ ಬಿಡುತ್ತೀರೋ ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು. ಆದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜಾರಾಮನ್ ಅವರು ಬರೆದ ಈ ಚಿಂತನಶೀಲ ಮತ್ತು ಕಠಿಣವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಲೇಖನವನ್ನು ಒಮ್ಮೆ ಆದರೂ ಓದಿ. ಅದರ ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನು ಶೋ ನೋಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ನೀಡಿದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಜೂನ್ 2024ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾದ ಅವರ ಇತ್ತೀಚಿನ ಪುಸ್ತಕ ಆನೆಕ್ಡೋಟ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಮಾಡರ್ನ್ ಕಂಪ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಕೂಡ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಅದರ ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನು ಸಹ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಅವರ ಅನುಭವದ ಸ್ವಾರಸ್ಯಕರ ಕಥೆಗಳಿವೆ. ಚಿಂತನಾಶೀಲ ಧ್ವನಿಯಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಒಂದು ಯೋಚನೆಯನ್ನು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸುತ್ತೇವೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜಾರಾಮನ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಐಟಿ ತಲುಪಿಸುವ ಸವಾಲಿನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ. ಹೌದು, ಇಂದು ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ಗಳು ಹಳ್ಳಿಗಳನ್ನು ತಲುಪಿವೆ. ಆದರೆ ನಿಜವಾದ ಕಂಪ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಇನ್ನೂ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಲುಪಿಲ್ಲ. ಅವರ ಕಾಲಾನಂತರ ಈ ಡಿಜಿಟಲ್ ಅಂತರವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಯಾವ ಹೊಸ ಆವಿಷ್ಕಾರಗಳು ಬೇಕಾಗಬಹುದು? ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಇಂದಿನ ಸರ್ಕಾರದ ನೀತಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಪೂರಕವಾದ ಅಥವಾ ಮಾರಕವಾದ ಅಂಶಗಳು ಯಾವಿರಬಹುದು? ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಇಂದಿನ ತಂತ್ರಜ್ಞರ ಪಾತ್ರವೇನಿರಬೇಕು? ಯೋಚಿಸಿ.